Yo, the double lights. Hello, what's up, y'all? He's light speeded into the side, dropped the saturate, and refracted back out without firing a bullet. That is a commitment. And look, these outlaw off angles really doing a lot of damage there for Wayne. A nice bonus, although things get a little bit messy. Outside of एक गेम तो कर ही लेते भाई फर्स्ट गेम भले मिस आउट हो गया एक गेम तो कर ही लेते बूम का मिस आउट हुआ है एमटीवी और किंग को देख लेते हैं कैसे खेलते हैं Also prepped to go into B main, quickly dealt with by the shock dart. Starting to sneak in the corner, but with the peek gets punished by minimize. मस्त है ये डीएल और वाइस का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है मेरे को. In that position there for the judge, unfortunately was pushed back a little further than he wanted to be. Over on the other side of the map, running pretty much the same setup outside of the one-way. Motive very much trying to contest both of the mains with the weaker weaponry. E-King punishes that and then takes a firm control of middle here. Also cognizant of potential main, but it comes down to slight timings. Vera silently pushing up across with the rest of the team. It's going to be stingers though, so the range not quite there. At least they get information for the team. I mean, yeah, but E-King's just going to kick off this mid to B split straight away here. Oh, they're going into spawn actually. They're going to wrap all the way through defense spawn here. So no TP going to be available for Wayne. एक और मार सकता था. Corner, Sushi Boys that receive with the stinger, some damage done, enough for Wayne to get shipped on towards Akana, but otherwise Spike safely planted on B. Be a hard retake. They're trying to misget through the smoke, punished immediately. It's all down to flaring to do a little bit more here. Guys, खाना भी है. Manages to retrieve the weapon. But still, that smoke's gone. Goes for the angle instead. Cover going out. Does take down one, so 2 more to go. Progression smoke now. Will have the flash as well, but will that be enough time? Oh, nice try. Just the angle helped by Dragon at the end. Yeah, nicely done. Going to deal with that bonus round pretty cleanly. 3 guns surviving through from E-King. Did a really good job punishing this judge play from the Soba inside of B main, and really nice and happy call to wrap all the way through spawn. It's really not something you see too much, but if you think about the kind of weaponry that Motive were bringing into that round, that is a pretty high percentage call if you think about it. Like, you just don't want to run into that cat choke point, you don't want to run out of the main, so actually shoving straight up mid and wrapping through defense spawn works out pretty nicely for him. Perhaps a good call from Minimize, but right now, for Motive to try to go back to gathering information off the rip. E-King organized as ever. This is definitely this kind of pre-planned round that you're going to see a lot from them this tournament. They're going to grab the Dimensional Drift on Lu, courtesy of the orbs that they farmed up in the bonus. Wayne spotted out with Operator in hand by the drone. So E-King going to avoid that potential snag and walk back to B main where they can potentially just kick this round off with the Yoru ult. Yeah, it's just Aaron on B as well. That would be a really big pick. Look at that. I mean, none of the team from Motive are moving just yet. Yeah, I mean, he's all alone here. Oh, Annihilation with the Yoru ult. They are really looking for him. They're really going fishing here, Quack. There you go. Oh. Managed to catch him at the end. Just kind of thinking that they were kind of using it as a threat towards the rotation as well, but it's going to be Baramesh quickly dealt with now. Once again, Styron gone. ऐसा लगा था बच गया. And Motive also trying to circle around from every single possible entry. Fire makes a go at the trip. It's a lovely pop flash coming through from Wayne with additional support. Vera trying to bait out early information, but it's not quite enough. It's Kadiri off from lane, able to lock down 2. GrabNet slows, and at this point, no more retake for Motive. They have to back off. That is just beautiful from E-King. They combo their ults so perfectly there. Dimensional Drift into B. Initial A main control courtesy of that signature utility. Got the grab net with the dart from across the map. Then they drone out middle, spot out where the Yoru is playing, and then just end that round with an ult combo straight into B. It's just perfect attacking round there. Really nice call.
And for Motive, not really much that they could do about that, unfortunately. The Sova is getting run out by a Yoru. Annihilation is sure to find him at some point. And unless somebody can make a play out of that spawn smoke and get a little bit of a flood on, then there's just really not much that Motive can do there. I mean, it was, as you mentioned, a beautiful pop flash by Wayne to set up that flank for success. But unfortunately from there, the round just doesn't eventuate into anything. Yeah, and that's और एक ये double duelist form. Not a lot of abilities to stall or delay, especially since you're running a double duelist now. Operator in hand for Wayne though. Having built up a comment from 4, that's a big recon. Wayne able to gate crash out. Really, really nice opener. I mean, Motive are squeezing a lot out of a little there. Just a recon and an op in the right position, giving them the man advantage against this half bite. More spotted through the camera as well from Sushi Boys. Still though, Sheriff's towards the back of the site. Trying to take more players as they try to aggress through, but most of it is now being smoked off. Cage up for Sushi Boys as well to get himself with his teammate. And with the recons now, some successful spams coming up from the duelists on the side of Motive. Off to the back end though, that's where Starrun and Sushi Boys go down. Spike getting planted. Still a man advantage for Motive though. Quick flank coming in from Flaring, who does have the paranoia ready to go here. Another blindside on Wayne as well. It could even secure more weapons. So unless Minimize and Akana are able to snag them, catch them by the graveyard or something, it's going to be pretty tough. Akana goes down first, and off the peaks, with another kill comes up to a 3K at the end of the round. Motive up with the lead. That's just Motive showing their class in that round. This is why this team has been so consistently winning challenges SCA, being one of the best Asian teams outside of Pacific right now. It's just not really too much in that round. It's a dart, a really nicely timed dart from Starrun to set up Wayne for success, and then a second recon as well. Like 2 40-second timings there, where it's a free piece of utility that gets Motive 2 picks, and just a lot of patience, allowing E-King into the site and taking their timings well. Strong mechanics for sure, not to mention ex-DSG core right in the squad as well. Love this the Singaporean reps, at least for me, but now come on, man, just E-King. You don't have to, just send it, just be biased about it, it's fine. God. We're definitely going with that. There's a lot more to come with Wayne starting things up. How you like that for E-King? Terribly. They've lost their lurker on the B side of the map. It's exactly what you want to see from the Waylay and the Yoru. You know, aggression in the early portion of the round, posing questions that E-King need to have the answers for, right? Drone straight through, they know that there's nothing on this map, and you can see the recording Motive. They're leaning quite heavily towards middle and A. Starrun's got all of this B main control. This is just perfect macro from the Singaporeans here. Well, Singaporeans and one Thai. Sushi Boys. Singaporeans, one Thai, one French Singaporean guy. Alex's relative, potentially, not sure. I think that's like minus one Morgan, but nonetheless, it's going to be the Thai player that goes down now. Confirming information from Motive about where E-King are located. Oh, wait. This is the mid-round call to go through from spawn to A. They're gonna get caught out by the op again. Some lick shots here and there, but not fully eventuating to much just yet. Lou able to shoot out. 20 seconds left on the clock though. And it's a progression smoke for Flaring to try to keep himself alive, but Dragon makes a go at it. जब इनको spawn control दिया तब तक ये plus point पे रहे, लेकिन ठीक है. Operator थी, बचा लिया. What a way to convert himself over onto a duelist role now. Yeah, absolutely. I mean, Wayne's looking phenomenal on this duelist role for Motive right now. He's giving E-King so many problems. Deep pick, straight down cut, gets a freebie at the start of the round, and he is just absolutely everywhere. I'm going to go through his career page right now. This is his second game of Yoru in an official. Second He's ever? only played one before, and he is absolutely cooking them. Just can't believe, again, see, this is what I'm talking about. You got Singaporean potential here. Yeah. All right, bro. Good half fight coming in for E-King. Let's see what they can do with it. Drone straight through A main. Going to get themselves another orb and just kick off this A execute into the side setup.
Making use of the Vi's utility, but that's exactly what you mentioned. All the trap setups that you have on site, Sushi Boys, this time over on the A, and he finds successful hits. It's a complete free game to wait on to another. Hops out with a shorty, but punished by Minimize. He picks up a rifle now, but Spike not quite yet planted. Feels a lot of pressure, maybe even a little bit claustrophobic as Vera comes in with the stun to close out the round. He just keeps doing that. He just keeps sending it into the site and saturating his opponent before they can even react. It's always on a retake too. Oh man. I know. He's feeling it. He's feeling it. Motive. They're looking confident. They're looking sharp. That was a very nice sight hold from Sushi Boys. I mean, there's a reason why they've stuck a Thai guy inside of Motive. He's a man with a lot of experience. He's going to be cool and confident, holding down these sites and perform when the pressure's on him and where it's needed. And that's a perfect example of it. ध्यान देना पड़ेगा भाई. Couple of good rounds. I don't know if he's going to be able to go in to get Bhai, that MTV retake खींच रही है. successful. Low HP is Dragon and comes back over to the rest of the team, but as soon as Star peeks out from door, But attack में 8 में से 3 round. Really nice recovery. I mean, Wayne, once again, finds success in the opening portions of the round and immediately puts Motive at an advantage, but it's a beautiful recovery from E-King, using all of their utility to be able to get back into the site. The Annihilation connects on that player in short. Steel Garden catches a player deep on Cat, and with the tree push straight through the smoke from E-King, they're able to turn their fortunes around with some really, really nice mid-rounding before the spike even goes down. Almost as though that is exactly what E-King has been needing to start off the rounds right, prevent Motive from even reacting to much of it. Right now, it's just early recon into A. Yeah, E-King force their way into A main. Hunter's Fury getting ripped from the attackers, going fishing for something, but not finding anything at all. Vera shutting them out of B main, but how is Kadiri connected a shot full saturate like that? Just 1 minute though. What talent. Thorns to apply more pressure over onto B side as well, but Motive not fully budging just yet. Another cosmetic stun, like, it's ridiculous sometimes. Don't even have the fault line in the game anymore. Look, I heard that there's a patch coming. There might have already been a couple little tweaks in there, because that saturate looked like it did bloody nothing, Quack, so I don't know. We're going to have a pure shooting game now. Yeah, maybe. It's going to be a little bit of shooting happening on this A site. It's a full setup for Sushi Boys, though, so it's going to be difficult to get in here. Wayne ready to peek from heaven as well. And there goes the first shot. Recon
Doesn't quite matter if Sushi Boys tucks himself around the cage, around Jenny, able to spot them out through the recon as well. Another shot in, and it's waiting for more punishes. Just Lou left, and he's trapped. Here comes the jumping shorty to close out the round. They have doubled up E-King's score. Yeah, Wade is just crushing it right now. Like, this aggression has just been impactful time and time again. Every time he takes a shot with the off, Gate crashes out, gets another opportunity to find more value, re-peeking out Heaven, and E-King just cannot deal with him right now. And unfortunately, there's just no one that can meet his match in the server. On the side of E-King, Lou's having a bit of a shocker on the Yoru, but look, it's on the attacking side. Hasn't got a chance to get warmed up just yet. Back onto the Sheriffs on the side of E-King. There's aggression into B main that pushes them away, but Kadiri continues to punish. Especially against the Eco round, so feeling the confidence to go for it. E-King trying to duke out the angles at least, but now needing to back off. Okay, flaring. Able to get one around A main, but another trade. Lou this time. Sushi Boys is cut in half, though. Deep position on Cat. Going to control any movements in the mid from the attackers. And not sure if he even the Sova there. Over on Tile's side. But with that trip in middle, that's going to keep things a little bit safe here. You have the drone on through. That'll spot the trip. Ikana will probably just go ahead and shock that straight away. So that'll put a little bit of pressure on middle, which will draw the rotation from Motive at least. Let's see. With 50 seconds to go as well. It's just one of the obstacles you got to deal with. I mean, Styron is on an island here. He's just going to opt to play things safe and give up that B side of the map. But E-King, they've gone it to spawn 3 times now. Styron is just ready for it. They've already shown this same play multiple times. And Styron be like, "Ghadi ghadi nahi aane dunga main spawn mein." Yeah, quickly anticipated. And what an angle to hold as well. Tough for E-King to really react. Even with the pop flash, Styron just holds down mouse 1. I mean, again, Motive are just showing their experience. Like, he knows Styron that he can't hold the whole map, especially with that trip going down in middle, so he's just going to give up B. They've got the better weaponry, they've got the numbers. If they need to retake B together, they can. And he's just going to put his butt in a corner and hold the middle of the map. Well played, well played. Motive putting pressure on E-King now on their map pick. See if E-King can pick up one or two more at the end of this half here. Ooh. Okay. Whoa. Again with the Waylay aggression. Punished once more, but Sushi Boys quickly to trade. Now you got Wayne down middle while Styron pushes out of B main. Oh no! Getting a little bit lost in the sauce. Motive. I was afraid that this would happen. But otherwise, a chance for E until Wayne lands a collat. Oh, it's crushing. He's just holding all of the right angles, Quack. Wayne can do no wrong. This guy was a control. This is his second Yoru? This is second game on Yoru. I think it's going to be a bit of a mainstay going forward here. Oh, it better be. And it's not even like he don't know how this functions or anything. They were playing this double duelist style with the Yoru Waylay and, you know, Yoru Rays and things like that all the way through their Oath run. Like, they're very familiar with double duelists. You had them switch away from it and Motive switch into it, and unfortunately, the comp swap has worked a lot better for Motive than it has for E-King thus far. It is so strange, and they continue to push out. This time, his territory, the drop onto Minimize of all players. Well as rules. And now you hear footsteps. Wayne able to lock up his initial angle. Still successful on the shot! Bro, he's in his bottom middle. He's in bloody tiles. Like, what can you even do? Styron under pressure, but Lou's shorty is not good enough to finish him off, and there's just no follow-up from E-King. Can't do it. They want to, but they're not able to, especially when everyone from Motive have them completely surrounded. This first half is done and dusted. 9-3 Motive has. Yeah, and look, we had both of the teams rate each other in the interview before we kicked off this series, and it's looking like one of them might have been a little bit underrating their opponent, unfortunately. Well, we're still early. This will be just the first map. First half also, but
can't deny already how much impact Wayne has been having on this on this defense, on this Yoru. Yeah, I mean, Motive are in cruise control right now. They've just come off the back of playing the finals over there in Vietnam. They're used to the land pressure. They've won back-to-back challenges SEA, so you can see they are feeling confident going into this halftime break. अबे कुछ चीजें क्रेजी है, you can't. अब वो वेन जो मार रहा है योरू लेके, Back into the second half ascent, Motive and E-King. Surely E-King does better on the defensive half, right, Billy? I mean, they do have the double senti. That could definitely help things out. They are ready for a mid-trap here. Just throwing this A main one way to try to dissuade Motive from taking control. But Motive, they are not interested in succeeding A main control. They will just burst straight into this A site here. Slight team flash does slow things down a little bit, actually still okay. Frenzy the way Wayne entered, reload. Wayne just continuing to spam down into the cage. Off the reload, खत्म कर दिया. rounds back in, and unfortunately, it's Minimize and the rest of the team who are all caught by this array of bullets. Oh man, this game's just over, isn't it? Like, this is just absolute domination from Motive. Despite the fact that you're just in position for a perfect flood there from E-King, not a single player can get a kill. Trying to stop Motive getting comfortable in that after plant. You can see they try to burst straight through tree side there, but there was already a trip set up from Sushi Boys. There's already a Cypher trip and a cage in that tree door, and multiple players coming out of heaven can't get anything done. Motive is just dominating them. What a okay, firing stuff from Motive now, from E-King now. Yeah, that's not what you want to be peeking down mid into. Now you've got an open with a here. Hold on. Oh no, he's whiffed it. He's absolutely cooked it. Well, mistakes were made. Yeah. All right, let's just calm down here. Let's walk up catwalk. You got 4 players here. But you got a couple here for E-King as well, ready to defend tree here, Quack. Yeah, good positions, especially within range of that right click. So it depends on the. Oh my God! Get out! We're done. We're done, Pilsky. This is not good. Minimize tries to back himself around the boxes, especially with a Marshall. That's a headshot, but no second one. Just Kadiri now. Certainly has the mechanics, but no util. Just a dream. Swings out all the way to the right, but caught by the stun at the end. What kind of a round was this? Oh, Motive. Just a little bit too clean in the mid to late round there. A couple of little tricks from E-King. You love to see it. Nice firing squad on the stairs in middle there. You got the shorty inside of the smoke. Missed opportunity. Honestly, I think if you get that pick on the opposing Omen and you're able to get a stinger inside A main, you could be cooking with something. But unfortunately, it doesn't come together, despite the fact that E-King needed to when they're this far behind. Full stinger investment here. I think this is just going to be a quick A play from Motive, and E-King are here to fight it. No, I still like that pretty nasty Marshall shot from Minimize, though, but okay.
Full stingers. Oh, when you just dive on in. Get yourself out. Sonic sensor gone off, but it doesn't even matter. Wayne actually able to land the shot with the gate crash into sight. Unexpected by E-King. Lou, though, up on top of heaven. And play it safe. Spots him out. Gets at least 2. And now here comes Akana. The rest of Motive trying to make their way onto site, but with the rifles in hand, E-King make a decent hold. Needing more utility and pushes though. Now it's Wayne underground. Gate crashing back into main. Closer towards the spike now, but okay. I don't know about this gunfight, Chief. Stinger versus Vandal at range. You're gonna need a lot more than a How have you gotten a quad in this round? Oh, dude. He's just ending our region right now. This is brutal. We're getting booked by a guy called Wayne. He's like 25 and 6 right now on his Most second hardcore official. IGN, by the way. Wayne is hard as... Yeah. Oh my god, how did he win this fight? Brother, come on! You shouldn't be able to do that with a stinger. This is illegal. My god. I don't think Motive even expected to win that round. And here we go. That was just their bonus. Got them. Hold on. We got minimized with a judge. Yeah. Couple rifles. He's chilling inside the same main smoke. This could be problems. It's gonna have to be. Especially with the slight high low, but Lou left him to his own devices. Cut them, it's over. Oh man. Hear the despair in Pilski's. ऐसा लग रहा है किंग भाई बच्चों के सामने तुम बच्चे हो भाई MTV के सामने खेलने आ गए हो. They've given minimize way too much to do. It's a bloody shrouded step into the corner. You've got a waylay light speeding over your head. Like, what do you even do against that? And they've been doing that exact play repeatedly now, Motive. Oh, he's got almost every single round on the attack half. अब जज मिल गई. Dimensional drift. He's picked up the judge. I think we know how this goes. We know how this goes, guys. You can hit the fast forward. Let's just go to the next map, all right? I don't want to watch this one. You gotta watch through every single moment of this, Pilski. Keep your eyes peeled. I'm gonna have to make you watch and potentially suffer. You got the smokes up now. Wayne's pushing to the back. He's fully blinded. Gets one. Gets out. Now the shots from Siren as he swings up. It's over. And every single kill goes the way of Motive. It's a flawless round and a near flawless map on this map pick of E-Kings. I think that the team is telling me that the reason Motive have been winning challenges SCA all year long. The core of this team returning from last year's Ascension. They are looking bloody hot here. Quack. Bloody hot is a slight understatement. Perhaps you've got, new compositions, some slight role swaps, and again, as you've mentioned, aptly put, a guy named Wayne to do it all. By a guy named Wayne. He was absolutely everywhere. You can see it in the highlights here. He's getting kills on off angles. He's gate crashing out. He's re-peaking. And there's nothing that E-King can do about it. I mean, this is the thing. Before coming into today, I would have thought Vera would have been the one to keep your eyes on, right? Vera versus Lou. But here comes Wayne. Basically, the addition to the team after Grumble left the squad because of, other commitments from last year's DSG run. And Wayne just steps up like this. I mean, Wayne, he's been a staple in this team for ages, hasn't he? I think he's been on that DSG for quite a while now. So, he has just been super solid, but he's someone that I only remember him playing Omen. He's got 110 officials on Omen. This is his second game on Yoru. He is unexpectedly, without even really anybody asking, showing us incredible duelist play, and refusing to elaborate, essentially. And some ridiculous shots to boot. I mean, I certainly did not expect that one. And I'm going to add, a little bit more successful on the off than White Cat. Yeah, a little bit. So look, he'll definitely be one to keep your eye on. Even if he can't see, he's still
getting kills, and unfortunately, there was just not much that E-King could do with that. So their map pick up on a very woefully, and I did a little bit sheepish going through the rest of this series, Quack. Yeah, we're gonna have to toss it back over to this. Does our desk feel sheepish, perhaps? We do feel that as well, Quack. I mean, what kind of domination was that, Morgan? Yeah, I mean, that was insane. That was insane from Motive. I mean, I feel like this is why everybody's touting them to be one of the favorites in this tournament. I feel like they played that game so cleanly. They understood the macro. They stopped everything E-King were trying to do. And, you know, we have to talk about Wayne. Wayne was absolutely ludicrous this game. The casters were mentioning it. His second ever game on Yoru, and that's how he plays. Give this guy more games on Yoru. Absolutely unbelievable. He was just pretty much playing like this was, you know, not even in competition. He was just doing everything that he could, showing off. Just give us as Valorant fans the best Valorant action that we could possibly see. I mean, I was blown away. I felt like he was playing the game with cheats on. He couldn't die. Didn't matter what ridiculous situation he found himself in. He was always alive at the end of it. He was always getting kills. 25 to 5. A 5 KD. 7 first kills. I mean, this guy was phenomenal. He took over this game, and E-King had absolutely no answers for his Yoru and his operator. For sure. I mean, coming in very, very double digits strong, में खाली minimize just to पहुंचा. kind of Oh boy. discuss a little bit, you know, because Wayne with incredible stats this game. I wanted to know, were there any moments where it looked like E-King could turn things around, or was it just like a clear showing of dominance? Well, it was only that very, very first few rounds, right? So we saw Motive win that pistol, and then the pistol and the conversion, and then E-King get 2 rounds back, and they were in the, you know, you feel like they're clawing it back. You feel like that they're able to sort of get the economy building, get those ults snowballing, but ultimately Motive shut it down. There was little glimmers there for E-King, but absolutely not enough. I mean, I'm scared for them as we move towards Motive's map pick. Yes, for sure. And always, we have mentioned so many times about this word called momentum. And I think Wayne single-handedly built up a mountain of momentum for the team as well, leading on to game number 2. What do you think needs to be done here by E-King to just be able to stay in the map? I mean, I think you have to kind of mentally reset, but, you know, I do think these kind of maps in a way are easier to reset from. When you get absolutely destroyed like this, you know it wasn't even close. You just go, okay, let's move on. So I just want to see them reset and get ready for map 2. For sure, and this is the time for them to reset as well. And for all of us here, just a quick break and we'll be back for map number 2. मैं सोऊंगा गाइस ये मैप के बाद, सच्ची बता रहा हूँ, इतना सर दर्द हो रहा है ना। 3 लोग देख रहे हो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन एक आया है मेरे को बताओ यार। अपन तब तक वैडल कंप्लीट करते हैं अपना। पता नहीं मेरे को लग रहा है कंट्रोलर है 2020 का है। रोज पहले ब्रिमस्टोन से चालू कर दो। ऐसा
ठीक है भाई अभी से मेरे को ये पता था राउंड देखते हैं अरे क्या दिक्कत है बिना क्लिप देखे करूँ ले भाई मैंने बिना क्लिप देखे उसमें ढाप 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 किया ब्रीच है भाई पेड़ है ब्रीच नहीं है फेड नहीं है अरे स्टेज का बैरियर और बे तो फरेंजी है वो भी ओनी की ओनी फरेंजी रेस होगी Finally back out in the field. Let's go. There's so many new toys I want to try out. परफेक्ट Side of E-King as well. We've seen them run this composition in the past. With this double duelist now, it will be them who want to be the aggressors. Lose Raze is very good, and Minimize stepping up onto the Yoru now. So no changes, no surprises. Everyone's had prep time for this, but this is Motive's map pick. They've picked it for a reason. They're very, very confident heading into this map too. For sure, and it's once again just to kind of remind the viewers, this is Motive's map pick, so they will be very, very confident with it. But I believe that Quack and the casters will have much more to say, so let's pass it on to Quack and Pilski. Thank you very much, Sarah and Morgan. Yes, we do have quite a bit to say. Singaporean caster, Aussie caster here as well. Do you have anything to say? Because I think the pressure is on for E-King. I just like ran into my bedroom after that map and I just held my dog and wept. Like that was the saddest thing I've ever watched. But I'm hoping for recovery here, Quack. I need something from E-King. Interesting to look at this double duelist look. I remember, you know, back in the day, I would be very surprised to see Minimize on a duelist. But it is a style that they played a lot. Yeah, I mean, it's a style they played a lot in their domestic run. So I want to see how it works for them. Their IGL is playing that Yoru, and he is aggressing it to A main here. They've taken some rubble space. They've denied info to Flare. वेन को ओमन पे किसने डाला? And they're kind of waiting for a response from Motive, who was set up quite heavily. They had a trap on front B. Sushi Boys spotting out the Prowler and a couple of players taking mount control, and you're immediately going to start to see some moves in the middle of the map from Motive.
Beginning to peek out, yeah. The footsteps and everything, of course, as well. But, ooh, okay, sheriff shots, and now they're going to back off. Yeah, regroup. Straight towards Seat Mount. It's just Sushi Boys over there on his lonesome. Motive re-clearing this A space as a team, which is exactly where E-King are heading. They are looking to regroup back towards A. So there'll definitely be a duel towards the door, I was going to say, but that's a nicely timed smoke from E-King. Nicely timed by Flaring as well. So hard. Okay, right on through though, and it's the trade successful for E-King this time. Akana with the spams against Baby Door. But here comes Flaring. This time, no more util. So he's just gonna come down to the shots and he eats a bit of paint shell's damage. Has to back off fully. Trying to work out with the rest of the team, but with the spike down and most of the E-King, Whoa. this should be theirs. Still a shot from Wayne though. Okay, and he is back on the controller. But nonetheless traded, and everyone trying to play it out safe now. A slight fight from Sushi Boys, but also spotted out by the flash, and that is where Motive meets their doom. E-King with the pistol. Yeah, nicely played there from E-King. Just playing the macro well, denying information across the map. They work every single part of it. This smoke and a nice timing for E-King makes a pretty big difference and allows them to pretty confidently get into that A site and set up a nice after plant. So this is really the start that they needed. Can see them getting excited about picking up that pistol because the last map was flat as anything. Trying to make this a little bit rounder than flat, I suppose. They do have everything bought up. I like my geometry. Okay. I thought you were going for like a conspiracy theory angle there. Short. A little bit. This is a conspiracy now, okay? Minimize is upset with that previous performance from Wayne. He wants to be Wayne. He loves Wayne now. He's saying, I will outlaw you on the Yoru. I have felt that pain. Ready for the jump spot. Surely this should be a freebie onto Flaring if he goes for it. Wait. Oh, there he goes. Another shot! Wayne is the one who gets the trade. I can't. Now Wayne has the outlaw, and everyone's like, all right, let's... Nah, you know, they're getting the spike down and see. Yeah, I mean, that is classic minimize. Look, for those that don't know, a player that I used to coach, a player that was known for being the IGL and saying to everyone, discipline, guys, don't peek, while he ran it down to get kills at Eco, has just got a 4K. Unfortunately, that's handed the outlaw to Wayne, and after what I saw him do last map, that might not have been wise. If Wayne even gets one more kill, it's like this is Minimize's fault. Yeah, yeah, absolutely. Whoa. Paint shells will flush him into the crosshair of Dragon though, and E-King, nicely done. 3 rifles secured, looking positive, but it's only early days here, and as mentioned on the desk, this will be Motive's map pick, and it's a map where they have had a pretty good run on it in challenges. Another team that did come through for challenges SCM, top dogs over there that will be present at Ascension here. Now they 13-2'd them on this map in the upper final. 13-2. It was a domination, so you know that Motive is very confident on this map playing this comp. Surely. That was a 10-2 defensive half as well, though, so I'm expected to see more now that they have the full buys. But here comes E-King, aggressive as ever. Off to the races, up A main now. Will get slowed down by the Viper wall. Yeah. Straight through it is minimized. Nice pick onto Styron that will get him the Yoru ult. And quickly into sight as well. Vera feeling the pressure, has to back off, but trying to receive more hits coming forward as well. Blast pack, but caught by Lou. There's that raise. Wayne now from the top, able to silence Dragon, so no more smokes, but you do have Spike down. This is where Flaring needs to start to get involved, start to come alive on this flank, maybe tickle the door, but E-King flipping the map a little bit, mostly playing from heaven and backside. Which would be pretty tricky spot for Motive to retake against. Flaring just taking time to clear out the back, but here goes that door push. Sushi Boy's going down though, and more trades to come. Boombot just makes it a little bit tougher for Wayne, especially with the smoke up. And that's nice try. Decision to go for it. Bonus round picked up because of it. Yes, they are really starting to get some momentum. Feel confident. Nice start to the round. You had the opening that you see from Paper Rex time and time again with the progression smoke out front side of rubble. You usually see Jing jump straight into that. Blue takes that space hand in hand with Minimize. I am clearly saying one thing. Straight through the Viper roll.
catch Styron off guard. देखना पड़ेगा. Pants down in the back of the site as well, and it was pretty easy pickings from there. Can already love the spirit that E-King are bringing into this match as well. Continuing forward with the buys, and it's minimize to really maximize his input with this outlaw. Shut up, Quack. Don't say that, bro. I don't need your dad puns here, alright? This is serious business, alright? Oh, sure enough. Oi! Oh, okay. Nice shot from Flaring. Sushi Boys on and off angle here. Going blow for blow with the Phantom. Dragon's going to shut that one down. And Motive getting a little bit of damage done. Wayne's in a cheeky position here. Pushing up the guts. There is the Nightfall picked up from Akana. Min-maxing those ult orbs nicely. Surely we're watching the flank though, right? Surely. Sorry, what was that? Min-maxing? You said min-maxing. And it's I really hope you like solo casting. I hope you enjoy it. Don't leave me. We're just gonna be able to push on up to find a little bit more, but well, it will be Flaring who ultimately gets left alone, broken up with the rest of the team now as he possibly looks for more angles. I mean, onto the Sheriff, wanting to get some exits if anything. Just dodge the seas nicely. Perfect. Going fishing, hoping that E-King will give him something, but you know, it's really of little consequence outside of kind of the ult economy. Flaring wants to maybe, you know, get a couple more towards the pit, but unfortunately does get nothing. Dragon will shut him down, and E-King up 4-0. They did choose to start on this attacking side of Lotus. They are playing that PRX comp. Minimize playing with so much confidence right now, getting a whole lot of anti-eco frags, and you know that makes a man feel, you know, what's the word? You know, powerful. You feel like you can do anything once you get 7 anti-eco kills in the last, or however many it's been in the last 4 rounds. That's a unique feeling all of its own. Interesting that you had to insert the gender into there, but jokes aside, it's still going to be E-King back towards the A main push. Door quickly popped and Vera has to back off. Pushed away. You've seen Motive stick around near the Viper wall far too long previously and be punished for it, so they are going to give respect where it's been earned. Oh, Boombot to check and confirm presence further as well, but at the same time, look at what's happening around Pillar. Face your fear! A fight inside of the door. Nightfall going to kick this one off for E-King, but Styron going 1-for-1 at least. Just not too bad, and then the rest of the team to try to back out towards Heaven, but more spams coming through with this Phantom. Akana, good for 1. Lou to lock it further down. Paint shells to block off the rest of Waterfall angle as well, or Link. And then the spike goes down. I don't see how this is going to be a possible retake without utility from Motive now. Just the angles, and it's all gunfight from here on out. Shot. E-King doesn't give them the duels. But unfortunately, a couple go off by the wayside. Dragon pulling them back in with a double kill at the end. E-King continue on with this flawless win streak. You got a little worried there for a second though. One player juggling utility. Sushi Boys wins that fight inside of that C-Link. And that's where you could start to see things fall apart a little bit. But E-King getting things back on the right foot. Dragon doing a really good job in that post plant. He's been playing this role for quite a while now, so you know he's comfortable playing those pivot positions. You are one map down, baby. Timeout for Motive. Have not had the start to Lotus that they would have wanted. Won Ascent a little bit too easily off the back of a phenomenal performance from Wayne on the Yoru, but it feels like they might have let their foot off the gas a little bit now. Surely. Not being able to contest for, you know, Rebel or anything much. They've always played these defenses off the back foot. 5-0, I think that earned you a little bit of smack talk, for sure. Spin looking stressed. I've seen this in Challenges SEA a couple of times where Motive are falling apart a little bit, and Spin is always looking a little bit stressed in the coaching booth as a result. A little bit frustrated? Perhaps? Yeah, a little frustrated. He's spinning out a little bit, some might say. But nice. look. Wow, and you call me out for that. But look, let's see if Motive can turn this one around. They are that classic team where, you know, they've been winning multiple challenges SEAs. They've continually been one of the best last teams game up now inside of SEA over the last year.
but sometimes they can completely 19 को दोपहर में 2:30 बजे, Unfortunately, the start of Lotus is 21 को looking दोपहर में like 2:30 बजे. here, Quack. Oh, definitely. We've seen some of these happen through the group stage of Split 3 and Challengers SCA, but 17 को 4:30 बजे और 15 को 2:30 बजे. especially with this time out now. Perhaps not for the current round with the slight half-ish buy going through. 4 लोग देख रहे हो guys, make sure to hit that like and subscribe button. For sure. C mount taken. Steel garden secure. Map begin. Motive rotating off of rubble, leaving Wayne on his lonesome. बनाते हैं guys, कुछ ये इस पे content बनाते हैं left, right and center. Hiding inside of the smoke. Whoa! And he manages to catch minimize. What a trade from Lou to then go in full contact, but a quick stop because of the toxic screen, and it's Styron who punishes them with the Guardian shots. Mid-rounding over to B though, perhaps. Really great discipline to swing through the Viper's wall together. Killjoy turret dealt with. B site taken. 3v3. King Motive well aware of that though. Little bit disjointed positionally to complete this retake. Do still have Vera over there on the A site. Need to take some space over towards A before they can kick this one off. Trying to go for it, but बच गया. Perfect. Ulti है, ulti retake deny करेगी. Wants to secure the round, but ring around the back. 1, 2, it's over. From Baby Door Dragon, what a transfer! Throw किया. Every single final shot, unbelievable towards the end. A Zowie clutch from Flaring. Nicely done. Just a glass cannon Guardian picked up there in that round from Flaring. Able to Throw secure किया. 1-on-2. Beautiful Zowie. ये अच्छा था. Things get a little bit messy in the ये बहुत अच्छा था, mid-round. पता है. Positioning hold करना. Advantage of that. I mean, not too many players will buy that फिर glass ठंग cannon करके बजा दिया. that glass can of Guardian rather, but Flaring is a player with really good first bullet aim. Very sharp when he's feeling himself, so you see him back himself. I win with that Odin. Pays off beautifully for Motive to finally put a round together. And thanks to that, they buy up some big guns as well. Got the Odin out. They're well aware that Lou has made it across to rubble, but he is isolated and picked by Ira, missing the shot, but regardless, Motive still have a man advantage. And they know exactly what the attacking side is doing. Win with that Odin. On C mount here from Motive. They're just in complete control of this round, and they've got so many obstacles. Wayne with the Odin too, especially. Well, looking for some options. E-King making it through the door, reveals their presence, and it's Flaring who feels the most pressure around this toxic screen. Backs himself out while the rest of the team comes in for support, but that leaves the C side open. But Motive, they've got a man advantage. They've got so many ults to play with. They're quite happy to just give E-King some space. Double nanos in the backside of the site. Sushi Boys is hanging around to defend here. Minimize गया. First. Kadiri with the lurk though. मैं बच गया. What a pop on the Flaring. Ekana as well as he continues to assault the भाई कैसा throw हुआ? onto Styron. Yep, Vera going to pick Kadiri in the middle of the map though and equalize the numbers. Sushi Boys does have the lockdown to play with. E-King throwing a progression smoke to potentially make him nervous about dropping it, but he'll do so nonetheless. And E-King will not push Waterfall. They must respect that and try to play the spam game with the Nightfall in the post plant. Ooh, Dragon thinking to go for the from the shadows play to avoid lockdown. Cancels this at the end. It's a counter Nightfall sent across as well, but here comes Vera. सारी अल्टियां यूज है. सब कुछ यूज कर लिया. Connects on the two. Explosive retake, multiple ults dumped, but a successful one nonetheless for Motive. Yeah, things got a little bit scary there for a second for Motive. Like, I felt in complete control of that round. They were up 5-on-4. They had all those ults to play with. Kadiri starts to harass them in the middle of the map, and Kana's able to spam one back as well. 30 seconds. Yeah, nicely done over the top of the Omen smoke there. But really, the combo of the ults do all the damage there for Motive. Lockdown and the showstopper in quick succession. Some nice movement from Wayne as well to get some space inside of the site. And it's a success story for Motive. Bye. Lou's got a showstopper and a judge to work with, and it looks like they want to go for a quicker play towards B. You got Flaring on this spot though. Snake fight.
alongside potential C's to slow it down, but not quite successful yet. The movement from सबको मार दिया. forward into sight with blast packs and a rocket. Just shot now. It's an Odin from Wayne to trade out. Akana quick with a response though, and just Sushi Boys on this operator. The fuck, सबको मार दिया उसने. You've got to save. I mean, they're giving him the respect that he deserves. Hello. Staring at vines, a prowler, and then a dark cover. Not giving him any angle, not giving him any opportunity to get back into this round. So indeed, he will turn away and save that op. And E-King, nice utilization of the showstopper, min-maxing the money as well. With the judged purchase from Lou, ends up paying off huge with that punchy B-side timing. Pretty lovely to see Lou kind of return to that form, return to that flashy play that we kind of are reminded of from Ascension 23. Yeah, I mean, like, exactly. He's one of the better duelists in Ascension 23, and we're talking about a tournament that had players like Jemkin in it, Yay, and those Juicy. kind of blokes. You know, Juicy, a couple of decent duelists in that tournament, and Lou was one of the better rated players at that event. I've watched this guy play some of the best teams in the world and, like, absolutely hard carry. Like, this guy has a phenomenal level of talent. Honestly, watching some of the games domestically, he hasn't been in his best form, but if Lou hits top level form, then E-King is going to be 10 times scarier in a tournament like this. Perhaps getting there. The Motive will make another go for it with the same purchase. Quick fight out, Rubble. Motive wants to contest this behind the Viper wall here, Quack. Oh, and quickly spotted by the Prowler as well. Lou confirms a kill against Vera. The Odin spam's still firing away, but to no eventuation. Siron going down. Who's next? क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? Around these spots, it's gonna be dimensional from minimize that ultimately undoes this site. A shorty kill onto Wayne. How you like them? Flawless. Flaring down and out by the smokes, and another end phase round where Sushi Boys just has to hold on to this op for dear life. Yeah, I mean, they just haven't gone anywhere near him. That's really nice from E-King. Motive, they set themselves up very, very well with an A-trap there. Had multiple players ready to fight outside of the door, and E-King kind of swats that aside. Now they're on the hunt. They're looking for Sushi Boys. They've got the money to be able to lose a couple of guns here. They just want to take the operator away. He needs to hit every single shot, and so far so good. He's hit Akana with a leg there. He's going to chase him down with the classic. But Nice try. Like, he's just got way too much to do. He's surrounded on all sides from E-King. So they will bring that op down and secure themselves a 7-2 here. This is a completely different game from Ascent. We're just seeing these map picks go either which way from these teams, which is exactly what you get in a tournament like Ascension, Quack. Like, you get teams that have never played each other. They don't know the other team's strengths and weaknesses and what their map pool's looking like. So you really can end up with vetoes like this. Like, I remember in VCT APAC in like 23, feeling really confident going into a game against an Indonesian team with a good veto and getting absolutely smacked and being like, those were our 3 best maps, you know? Just completely goes topsy-turvy. I mean, that's exactly what kind of Morgan was talking about on the desk as well in the pre-show. You can boot camp in Thailand and stuff, or maybe even come in with preparation hot off the win from Vietnam, but are you prepared for this sort of international / inter-regional play that we have in Pacific, especially with so much time between, you know, each stage down to Ascension? So now it's this full buy. E-King taking it very carefully here, Pilski. Yeah, I mean, if there is a team that is ready for it, it's E-King. Like, this team has done multiple boot camps overseas. They played at Ascension 23. These players have a lot of experience right now. They've played some of the better teams in the world. They boot camp during Masters events, you know, to play some of those better teams. You know, not only just from the Asian region, but even, you know, teams from NA, teams from Europe. You know, they've had that practice against a lot of different styles, whereas other Oceanic teams really haven't. Afforded to do a lot more, especially now that they have an org backing as well. So, no roadie jerseys for this year, but you're into a site where there's a successful stack from Motive.
Stack side. Opening sheriff shot. A second one from flaring. Goes down into a drop. And Bola stack side. quickly blast backing into Spike. Kadiri has to hold it down, but the space क्या बोला तुम लोग को मैं? bring a success to Motive. Quack. Oh, let me tell you about some things that are Australian, okay? Okay. You got snags on the Barbie. All right. Sure. You said roadies. We've got tradies. They're called Tradies, sorry. Yep, tradies. Roadies are the ones that set up the concerts and that. Tradies, you know, Okay. get on the tools. That's very Australian, all right? What's something you Okay. think is Australian, like the beach or something like that? You know? Yeah. I'll tell you, there is nothing. Bondi, bro, come on, you're killing me. There is nothing. Bondi Beach. Yeah, Bondi Beach. There's nothing more Australian than getting E-code. There is nothing more Australian than getting E-code. So that was very. Flaring भी like क्या Australian हुआ from ये? E-King. क्यों हुआ ये? Flaring has absolutely cooked them there. And we're just talking about his first bullet accuracy on the Guardian, and once again on the Sheriff, he's gone absolutely massive for Motive. Oh yeah. Brought out shades of that stinger round from Ascent, but here they Hello. go again. Oh, just blind in. A bit of utility to support, but Motive this time able Whoa. to withstand. Just भाई आ गए, यहाँ आ गए अपने में. pops and finding successful hits against E-King, who are now slowed down to a near halt. They continue to try and अगर कर लिया have to तो play TP careful किया. around the doors. 5 people are watching guys. TP Make sure towards with the that like back and and subscribe. Kadira Let's just to watch. go. Okay, crash away from minimize. Trying to make Motive consider the fact that they could have rotated away, gone elsewhere. Kadiri looking for a timing off the back of that, waiting for a mistake from Motive that won't eventuate. Motive playing it safe though. No sound. But quickly spotted. Into a backed angle. Wayne still managed to get at least one. Kadiri now in a 1v2. It's the youngest new addition of E-King, playing that sentinel role. There's a lot of pressure to come up clutch in the 1v3 here, but he's picked up the steel garden off the back of that plant. 1v2. Quickly rips it for a couple more seconds off this spike. Holds on to the off angle. Manages to get the first tap. Nice. Out for the wide swing. He just spams through this paper thin box. Flaring. Like 3 out of 4 of the rounds here from Motive have all been flaring. He is honestly really dragging Motive, kicking and screaming through this game on the defensive side. Flaring बजा रहा है भाई. Fortunately, Motive, or rather E-King, a chance at a clutch there, going begging. Good attempt though from Kadiri. Backing himself on that off angle to just get that last tap through with the Guardian there. But Flaring getting the nice little crouch peek in and the spam through the box on the Phantom. A little bit better. Okay. A little bit more trash talk. Love to see it. Especially because they're kind of facing each other on the stage as well. But here we go. Last round of the first half, buddy. Yep. Sushi Boy's forced away. He does have an outlaw here. There's 4 players with light armor over on the side of E-King. But there you go. Showstopper secured for Loot. Surely just going to burst straight into this site. Alongside the Nightfall as well. पूरी side giveaway कर दी गई है. Tossed in. But the Showstopper does not connect. It just buys a lot of space. RNG! A spike plant soon enough as they continue to fan out. Takes down Sushi Boys. Counter Nightfall sent out on the retake though. Nice. Perfect angle towards फिर the से back. flaring. Flaring then picks up the double. फिर से flaring. Wayne out from stairs. A couple more shots towards the back of some E-King players. 7-5 at the end of the first half. Yeah, really good recovery from Motive. Beautiful paranoia through spawn side. And flood from Motive off the back of that. It's a good recovery after a couple of touch and go rounds. Majority of the damage in this half done by Flaring, but the rest of Motive recovering well as well, Quack. It's quick recovery. It did come a little bit shaky towards that first half. I mean, round after round, and then minimize hunting down, gunning down Wayne and such. But here we go. It will be that little halftime break. Don't go away because after this, it's gonna be more spicy action between Motive and E-King on on Lotus.
क्या मस्त लग रहा है ना तो I am loving the like music over here. अच्छा लग रहा है. Here we go again, straight into second half, and something I just realized as well. It might be Paper X's comp on E-King's side. It's Genji's comp on Motive's side. True. I mean, look, these are just the most popular styles on this map for quite a while. Got a bit of the old versus the new here. Straight into the B site for Motive though. No one on E-King really in position to deal with any of this, and Vera's got a bloody frenzy and armor inside of the door. And armor. And pushes them off with the Prowler as Plant well. हो गया. Hello retake. Not wanting to dance with death for now. Lou and Akana gonna have to bide their time. Paranoia Consento cross, and that's gonna be the go signal now. Minimize. खेल दिया बे retake. Shots. Sarah can't quite hold on, and it's gonna be Wayne who tries to back out, but to no पूरे site पे it's बैठे gonna be थे. E-King picking up the pistol. Yeah, really nice B retake there. Something that they are very accustomed to is flooding into B. Really, really nice utility to be able to set them up to do so. It's a great Paranoia in from Waterfall side. They know they were giving up the middle of the map there. In fact, it's the Paranoia that actually flushes Vera into that duel with Akana, which she's 100% ready for, and the rest of the dominoes kind of fall after that. The big focus point for Motive there was definitely the raid boss, Frenzy Armor, inside of the door, and that just gets toppled fairly quickly. Another pistol picked up from E-King. But Motive definitely not out of this yet. I mean, they lost pistol, lost bonus, lost 5 in a row. But still recovered last half. Let's see if they're able to do that again. I mean, this time on the attack, so could be a little bit more difficult, but who knows. Kadiri onto this Vi's able to slow everyone down in their tracks, but a couple managed to slip past, which really tosses things. सारे rounds retake पे खेलेंगे, दिक्कत होनी ही है. अभी तो guns नहीं है, बच जाएंगे. So they definitely would have got util combo there if they stuck around on pillar side. Now organizing themselves for the retake. Boobot at least confirms one out by stairs, but there we go again. It's Draken's Paranoia, the catalyst for the retake to ultimately minimize on just the ghost. Flicks out the heads and they spot out अभी तो guns नहीं है, बच the जाएंगे. final end. बाकी flood retakes ज़्यादा काम नहीं आएंगे. This guy's got so many eco kills this game. Like, how many has he got? How many? It's crazy. The outlaw from before? Yeah, again, like, that's another 3k on the eco. This guy's an absolute farmer. He's definitely got a future in agriculture, which is good news because he is from Western Australia, guys. You know, there's a lot of empty space over there. Definitely get something going if this doesn't work out for him. But look, nice anti-eco win there from E-King. They're going to get into the bonus now. They did manage to topple Motive on their last bonus, and it is going to be a bit of a fight over A rubble here. Should be a right read across the map as well. A sudden push from Motive in this spot, but quickly getting tagged out. Paint shells lobbed across, but it doesn't eventuate much. Lou able to gun down most, but Sushi Boys and Flaring fight back. Trades back from Motive, keeping this one interesting. Flaring barely alive here. Could get blown over by a small gust of wind, essentially. One kill off with the Dimensional Drift, which could be used to secure this round if that's what E-King want to do. Do have the shear in position on front B, and Kadiri is close enough to rotate. Recalling my box. Oh no. I might have overthought the decision as well. Takes further time away from the spike plant, but Sushi Boys deep into cover, able to take down Kadiri, and now the call over to C site. Minimize on with his outlaw on a retake. Could be tough. Spike planted. 2 shots, 2 kills. Especially with the angles too. Scoped in, can't see too much, and Sushi Boys makes quick work. Good recovery from Motive. Very, very nice rubble fight though. You can see here from E-King. Do have Lou who pushed up inside of that progression smoke over on rubble side, and the second wave of that was the TP top rubble with the blind side. Caught multiple players with their pants down.
But despite a messy early to mid round, the 2v2 goes the way of Motive. They just do the high percentage play, push through the middle of the map together. They've got the better weapons. Op out now for Minimize. And potential dimensional drift too. It's Lou again with the judge into the spot, but caught by the seas. Dragon trying to bail everyone out with the paranoia. Goes in for the swing. Almost snaps onto more, but it's the Odin spam onto the other side. खत्म कर दिया बे MTV को. They cannot stay in this spot, but they've all gone down. Yeah, these rubble fights are just way too strong from E-King. I mean, we say it all the time. The team that can dominate rubble on Lotus is often the team that is going to win the map. And so far, it's felt like E-King have been the better of the two. Minimize going to end the round with the operator in hand. 5 players surviving for E-King there after doing a lot of damage with the bonus round. That will definitely break Motive's economy. But it's the same timing yet again there, Quack, that goes so well for E-King. You get the initial... अरे सिंपल है, यहाँ पे तुम रबल फाइट कर ही नहीं सकते हो. उनके पास डबल फास्ट एजेंट्स हैं. Swinging off the back of that. Well, you can hear it. The utility definitely having a lot of impact coming from E-King. Not to mention the fact that they've reached up to double digits, still holding on to a couple of ultimates as well. Opts out there. Minimize. Turret dealt with in the middle of the map, took absolutely everything out of Akana. It's just one of those days, man, where the smallest task feels impossible. We've all been there. To be fair, it's an Odin, and you know, it took a little bit of time to scope in. We'll give him some chops, but Motive trying to creep. Oh yaar, nah, bro. Sushi Boy's caught out outside of Mounds. Now some taps towards the top of heaven. It's going to be a quick signal for the rest of E-King to get prepped up for a potential B hit. Nightfall and Dimensional Drift. They want this map bad. Yeah, investing a lot of ults against what is essentially an eco with only one rifle. Might be more costly than necessary, but hopefully won't come back to bite E-King in the long run. All right. भाई वो बचा कैसे? As long as you secure this round, but look at Motive. Yeah, pivot back towards that A side of the map. Can't get an angle on the op because you have been smoked off. Lou will have to respect this A control. Motive will be able to get themselves into a post plant here. Managed to avoid the Rose as well, so Spike plant goes in. Anyone close to ultimates? Perhaps Wayne, but that's an Omen ult. So not too much, just tucked into the corner. Shot's not successful. It's Lou, and he goes in for the tap. Makes Motive feel a lot more nervous as they right-click away from the smoke, but as soon as smoke dissipates, पोस्ट प्लांट तक जा रहे हैं. पोस्ट प्लांट नहीं होल्ड कर पा रहे हैं. कुछ तो दिक्कत है. Really securing control of their economy now. They've got a fair bit of cash in the back pocket, but up 11-6 after a shocking performance on their map pick. The mental recovery to come back into this game, you could just hear it from them in the replays, celebrating these round wins. They are really starting to feel themselves. Dragon's been very consistent, some nice taps in that round. Minimize has been outstanding on the Yoru. Op in hand. And at the end of that round, Showstopper secured for Loot. It's a really nice retake tool. Motive might be one of the last gun rounds they get going into this game. Close to a lot of ultimates. We'll see if they want to try to work this orb control. It's going to be quite the climb for them to even out the score too, though. But at the same time, you know, if this keeps up for E-King, they might even have a pretty good chance at closing out the series onto the third map. But for now, just spot it out. Minimize. His gate crash has expired. Oh, quickly sets up another. Got out. Showstopper picked up from Vera. I love the position from Minimize. Doesn't end up eventuating into anything. The timing is so awkward. Prowler to clear front B here. E-King looking for information. Alarm bot dealt with. Back towards that A side of the map. Sushi Boys, he was trying to sell a false bill of goods over there on the C side of the map. He hits the door, but he pays the price for it. Guys, overthinking kills your sleep. Somewhat costly. Trying to work alongside Flaring's utility and smokes now, but Minimize is already right on top. Down A.
30 It's seconds just going left. bad to worse for Motive, and now they're going into the A site against the Showstopper. One enemy remaining. खत्म. Yeah, had a brief second where they thought about potentially going over to B, but more players and everyone is surrounded. Odin at the end to take down Vera, and E-King have reached up to map point. Yeah, this is just a phenomenal recovery. I'm so impressed with the mental resilience from E-King right now. Cut. Very impactful from Minimize. Took a couple of pointers from Wayne in that last game, I think. Spam through the bloody door. Everyone's getting involved in the action. Another nice 2K on an off angle from Dragon as well. Timeout for Motive. One thing is for sure, Spin will be molding. I think he has been bald before. One way or another, I think this is very un-Australian of you, Pilski. Oh, sorry. My bad. Spin has got a sick mullet. That's for sure. I'll give him that. He has got a sick mullet. You can't see it from this angle, but bloody hell. And look, I think the look on the coaching staff's face says it all there. They are feeling pretty dejected about how this map is going. But this is really just a metaphor for Motive Esports as a whole. Like, they are winners when they're playing their top level game. They look unstoppable like you saw on Ascent, but they are a team that inexplicably can go completely missing sometimes. There's always been kind of the pattern with them throughout the entirety of Challengers this year. Certainly something that they need to deal with coming into Ascension, because if not, like you mentioned before, the slightest mistake and everything could go south. Don't overthink it. At least for now, for E-King, it's going in a pretty good direction. Potential fight on Mount here could be huge. Ooh. It's a 3-stack as well that's not fully noticed yet. Yeah. Motive are not interested. They've crept outside of rubble I have the spike. behind their Vipers. They're clear बहुत जल्दी है. just going to use that as a bit of a launching pad to get straight into this A site. They have the ults to do so as well. Nightfall and Showstopper. It's a full retake setup for E-King, but the Yoru's already over here on an off angle with the op. Anybody going through door? It's the Prowler pushes on to minimize, but oh, he TP's out. Showstopper, no connection. Zoning E-King straight away. Now prepping themselves for the retake here. Both the Nightfall and the Showstopper already invested for Motive. You're done. Ooh! And it's a shot mid-air against flaring as well. Blue has a full kit. Blind shots from Sushi Boys catches onto Akana though. And now, having the pressure, E-King actually just goes in to deal with every single player bit by bit. Vera's now down and out. And with more utility thrown in, that will be the entire map. Every single player from Motive down like dominoes, and E-King managed to push us into a third map. Yeah, beautiful recovery from E-King. Able to play a fantastic game of Lotus here, spearheaded by Minimize, the IGL on the Yoru. Really impactful performance, great structure, a lot of nice little set plays that really helped them. Sombhai क्या कर रहे हैं? You just gotta believe me. Like ESL Impact? I can't. But you can. On target. Good try. What about you fucking bucket? I had an op here. Fuck. You can still buy an op, you bitch. Hello? My bad. I'll save for you, bro. IG you next round. IG No, you, it's yeah? force. No. I have you. Brother, you gotta force it. It's our force. Yeah, you know do it. No. You don't understand. Yourself was good for 5 this round. Don't even worry about it. Yeah, I got us. Don't worry. Do what you want. Now that I have a Vandal, we'll win. OBS website's a log analyzer that will tell you the issues are detecting how to fix it. It's a misunderstanding. An issue of mismatching sample rates on your devices. Oh. Nothing C. Hello. Zero C. Okay, let's get in there. Sombhai. Right, man. What is that? Wow, Sombhai. Last player standing. Or you just flashed you with that? Spike planted. NASA year, I think of 11 months.
What is Kel'Thuzad doing? Currently, my coaching things are going Who needs a buy? like for 2 people at midnight, bro. That's very unlucky. I can buy you, bro, Ricky. Yo. I buy them already. No bro. peeking. हर कोई इसी चीज में जा रहा है. मतलब once you were कुछ क्या बोलते हैं, एक टूर्नामेंट प्लेयर थे, तुम कुछ कर रहे थे, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तो तुम कोचिंग में जा सकते हो बेसिकली, अगर तुम्हारे पास गेम नॉलेज अच्छा है. Wait, are you gonna watch? Round, getting 5 rounds in a row at the very start of this map lets you throw map 1 out of your mind. They completely forget what happened in that map. Now they're in this one. Now they have the lead. Who is We she? saw that confidence. Vandal, a little bit of a space when it comes to that smoke, but the paranoia wouldn't connect. Instead, Polly secures another kill, and that's towards Twirly. And Lulu gets stunned though. They're setting up the flash. Polly knows there's gonna be another player here right in front of her. That's gonna be the 4 kills going in for the ace to close this round. What a game coming in from Polly. They brought out the bulldozer in that last round there, and you can see how quick when the hyper flash all works. Like, doesn't matter if Ayumi doesn't get a kill. She just needs to push just to make that space happen for the rest of the players here of Hypa. Vandal, a little bit of a space when it comes to that smoke, but the paranoia wouldn't. हिंदी में अभी कौन है डेस्क पे? खुद को खुद से ये बात तो आपने काफी सही कही. जिस तरीके की टाइमिंग वेन पकड़ रहे थे असेंट पे ऑपरेटर के साथ, मुझे लगता है बिल्कुल उसी चीज को मिमिक किया है मिनिमाइज ने. स्पेशली डिफेंस मजा आएगा रे, हिंदी में देखता हूँ. बार निकल के वो फ्लैश निकालना, अटैकिंग में वो फ्लैश टीपी सीधा साइड के अंदर. ये बात तो आपने काफी सही कही. मिनिमाइज ने वो काम जो शायद थोड़ा सा अधूरा रह गया था असेंट पे, पूरा किया इस मैप पे. ये देखिए, ये इतने क्यूट अभी लग रहे हैं ना, ये है नहीं सर्वर में. ये प्रोडक्शन के लोग तो देखिए बताएंगे. आपने भी इतने सारे मल्टीपल इवेंट्स कर लिए, इंडिया के सारे टॉप इवेंट्स आप करते हैं फ्रिज. आपने भी देखे मीडिया डे में जबरदस्ती प्लेयरों के साथ ये कराया जाता है कि ऐसी शक्लें बनाइए. बिकॉज हमारे प्लेयर्स काफी सिंपल होते हैं, ऐसे मामूली से, उनको इतने ड्रामों की जरूरत नहीं है, बट उनको बनाया जाता है बिकॉज दिस इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. और प्लेयर्स का ये साइड भी देखना काफी लाजवाब रहता है. बट स्टैट्स की तरफ देखे ना, ACS 333 है यहाँ पर, डैमेज पर राउंड, एवरीथिंग लुक्स फिनोमिनल. आई एम एक्सपेक्टिंग अब मजा वही आएगा कि बाइंड में क्या होता है, बिकॉज बाइंड के अंदर टेलीपोर्ट्स हैं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो उस मैप को ना बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं. इवन लास्ट मोमेंट के अंदर आपके पास 15 सेकंड बचे हैं, आपने सीधा इस साइड से टेलीपोर्ट करा, हुक्का से भाग के साइड पे प्लांट कर जाते हैं. टू मच ब्रेनस्टॉर्म होता है वहां पर. और उसमें भी आप यूरो ऐड कर दीजिए. ओह नो, कि अगर आप मोटिव की तरफ बात करें तो वेन भी खेल सकते हैं या मिनिमाइज खेल सकते हैं. तो आप टीपी तो चाहे ए पे करिए, प्लांट अभी भी बी पे हो सकता है क्योंकि वो गेट क्रैश छुपा हुआ रहेगा उस साइड में. ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना बहुत सारी आप लगा सकते हो इस मैप पे. क्या एजेंट कॉम्पोजिशन आएगा, सारी चीजों का इंतजार है. बाइंड एक ऐसा मैप जो पर्सनली मुझे नहीं लगा था कि शायद वहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं बड़ा खुश हूँ कि पहुंचाया यहाँ पर हम लोग को इस तीसरे मैप तक. जानेंगे क्या होता है बाइंड के उस मुकाबले पे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मस्त है बे. पीपल से हिंदी कास्टिंग भाई, हिंदी कास्टिंग अच्छी है. अंकित भाई क्या कर रहे हैं? क्या मालकीस्ट. अरे नहीं यार, बट यार हरा दिया. तो आपको कैसा रहना है कम्युनिटी के साथ, कैसा बिल्ड करना है, कैसे पैसे कमाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप झूठ बोल के चाहोगे कि पब्लिक को आप सपोर्ट करो, गाइस मैं VCT जीत जाऊंगा, मैं CS में जीत जाऊंगा, प्लीज़ लाइक कर दो. फिर पब्लिक इसलिए गाली देती है उन लोगों को बाद में कि साले तेरे को 2 साल से देख रहे हैं, 5 साल से देख रहे हैं, 3 साल से देख रहे हैं, साला अब जीतेगा, कब जीतेगा. कभी तो टीम चेंज कर देता है, कभी तो बोलता है आई वॉज हैविंग अ बैड फेज इन माई लाइफ, आई वॉज हैविंग डिप्रेशन, आई वॉज हैविंग दिस, आई वॉज हैविंग डैट. बट जो
मजा आता है वे बोलता अंकित है, भाई वो की साला स्ट्रीम और देखने। वो ओनर की नहीं सोचता, वो फैंस की नहीं सोचता, वो कम्युनिटी की नहीं सोचता कि साला वो 20-20 साल से पब्लिक सपोर्ट कर रही है इसी होप में कि साला एक प्लेयर, एक और ऐसी निकलेगी या एक टीम ऐसी निकलेगी तो साला मेरा इंडिया को रिप्रेजेंट करने का सपना पूरा करेगी। पब्लिक वही लोकल 2-4 टूर्नामेंट जीत के रेडिएंट रैंक फेसिट लेवल 10 दिखा के खुश हो जाती है, भाई देख मैं पहुंच गया गाइस। तो ये तो ऐसे तो मतलब कब से पहुंचे हुए हैं पब्लिक। रेडिएंट भी कितने बन गए, फेसिट लेवल 10 भी कितने बन गए, जीता कोई नहीं है, तो हम सब सेम बोट पे हैं, समझ रहे हो। आप भी सीख रहे हो, चैट में जितने लोग हैं आप भी सीख रहे हो, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, मेरे को लोग देख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। सही है। कोई और लैंड टूर्नामेंट खेल रहा होगा वो भी सीख ही रहा है, तो यहाँ पर कोई किसी को पटेल ही नहीं दे सकता कि भाई तुझे पता है मैं रेडिएंट हूँ, तुझे पता है मैं लेवल 10, तुझे पता है मेरे पास 600 FPS का पीसी है, तो क्या उखाड़ लिया, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, बोलना यस चैट ब्रो। जीत रहे ना अभी, तूने ये डेडली आदमी को बुला लिया, अभी जीत जाएंगे अपन। बात करता ना तो और करूंगा, तू अल्ट कर, पोजी दे, मैं उधर अल्ट कर देता हूं, फिर तो अपना अल्ट खोल ले, वो स्लो रहेंगे। और तब तक मैं क्या करूं? ठीक है तब तक मैं क्या करूं? अल्ट कर, फिर मैं तो स्लो करूंगा। गाइस हिंदी कास्टिंग देखेंगे, रुको। The thing in Indian people not gonna lie is blaming others but not trying, and also one more thing, there are many people who are capable of performing at those kids getting highlight, not getting highlight, that's the problem. Exactly, and that's what I said earlier also. If you guys actually, if we all actually want a team of 5 people representing our nation in the next 5 years, abhi to nahi hoga, you have to scout those people. Someone like Tata Birla Ambani should jump into the scene, give a blank check to a guy who they trust, who the community trust, and do a talent hunt. साला कितने लोग हैं यार, कोलकाता, आसाम, यहाँ वहाँ, इंदौर, कश्मीर, हर जगह प्लेयर बैठे हुए हैं। साले लोग 100-150 पिंग पे खेल रहे हैं, 200 FPS पे खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। उसके पहले उसने देखो बिठाया रहेगा, वैसे लोगों को ढूंढ के ग्रूम करके कर सकते, ये कर सकते। हाँ, दिस इज समथिंग व्हिच इज लाइक अंकित भाई जो बोल रहे हैं वो हो सकता है, वो देखते हैं अंकित भाई बोल क्या रहे हैं, तब जाके डिफरेंस होगा। यहाँ पर तो आपको वही प्लेयर दिखेंगे, इतने साल से मैं खुद देख रहा हूँ, वही झूठे वादे दिखेंगे। अभी आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एवरीवन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं खाली सुन रहा हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार हम भी यही सोच रहे थे। आप लोगों को पता है, मुझको पता है, सबको पता है। अबे कैसे मार दिया। क्या आप लोग? नहीं आ रहे ना। अरे कटियार साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू वेनम टीयर। भाई वेनम टीयर वाले मेरी छाती चौड़ी कर देते साला। वेनमो को ना पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई है, तो वेनम वाज फीलिंग लेफ्ट आउट, बट थैंक यू ऋषभ। धीरे धीरे वेनम टीयर वाले भी बढ़ेंगे। ओके ठीक है। भाई सच बोलूँ तो घर वालों को आपकी स्ट्रीम दिखाई थी जब अलाउ किया कभी कभी गेम खेलने के लिए, वरना सिर्फ 3D मॉडलिंग एंड VFX वाला काम ही अलाउड था। तुम दोनों एक साथ सेम खेल रहे हो? आपको पता है आपके घर वाले क्यों आप ऐसे स्ट्रीम दिखा सकते हो? क्योंकि घर वालों को अब भरोसा हो गया है मेरे पे, और वो भरोसा मैं तोड़ता नहीं हूँ लोगों का। मेरे मीटअप पे भी पेरेंट्स आते थे, आप मजाक नहीं, मैं एक बार लीक लेता हूँ। लाइन में मैं खड़े हुए मैं देखता था, मॉम डैड खड़े हुए हैं बच्चों को लेके। वो क्यों था? किसी को गेम खेलने मिल रही है, वो भरोसे के ऊपर ही था, इसलिए मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। मेरे को और कुछ ऐसा फैंसी वो नहीं है कि भाई मान लो मैं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, एशिया का नंबर 1 प्लेयर, कुछ नहीं है। मैं डिसेंट प्लेयर हूँ, डिसेंट आदमी हूँ, बट अभी तक टिका हुआ हूँ इतने सालों से, सिर्फ सच बोलने की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। और यही बाकी लोग भूल जाते हैं।
इंस्टेड ऑफ फेकिंग पीपल, इंस्टेड ऑफ फूलिंग योर फैंस, सच बोलोगे ना वो कनेक्ट बहुत जल्दी बिल्डअप होगा। बिकॉज ये कैमरा के लेंस है ना, आप पब्लिक को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, जिस दिन पता चल गया पब्लिक गायब हो जाएगी सीधा। नहीं भी तेरे सामने One enemy remaining. एक और इधर ही आएगा। Spike down mid. सामने आ गया सामने आ गया। टैलेंट हंट इज द ओनली वे। एग्जैक्टली। बाहर क्या होता है, अकेडमी टीम्स बना के रखती है पब्लिक, यहाँ वहाँ से। यहाँ पर क्या होता है, अरे मेरा दोस्त है अच्छा खेलता है, ले ले उसको, हाँ ले लेता हूँ, कितने पैसे लेगा, अरे इतने पैसे लेगा, हाँ ठीक है डन कर दे। फिर दूसरी ओर में जाएगा, अरे ये अच्छा नहीं खेल रहा है, इसको निकालते, इसकी वजह से हार रहे अपन, मेरे दोस्त को ले लो। ये दोस्ती यारी में चलता रहता है पब्लिक। इससे होता क्या है, जिनमें एक्चुअली टैलेंट है, जिनको पता ही नहीं है कुछ कि भाई किससे बात करूँ, कैसे पहुँचूँ, उनकी हो जाती है ठुकाई। फिर वो क्या 2 साल खेलते छोड़ देते हैं, बोला यार साला इधर चांस ही नहीं मिलता है, कैसे खेलें, कैसे टीम में घुसें, कोई भाव ही नहीं देता है। जब तक तुम पब्लिक को थोड़ा पटाओ नहीं, मस्का मारो नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। टैलेंट को चांस मिलना चाहिए, बट अभी अनफॉर्चुनेटली अपना सिस्टम है ही नहीं वैसा। हाँ 1-2 लोग को मिल गया, आप लोग बोलोगे देखो इसको तो टैलेंट से मिलाना। अबे यार 1-2 तो, एक विराट कोहली भी हो सकता है, एक सचिन तेंदुलकर भी है, बट एक ही है ना वो ब्रो, हजारों थोड़ी है वो। बात परफेक्ट है। लोग कितने हैं? वेनम भाई इधर क्लिप कर दो गाइस पे, आजा सामने तेरे। Last player standing. दोनों मैंने। लेट्स सी। Last player standing. टॉप से मार दिया साला। आपने मस्त मारे थे साइड पे। हाँ ना। अरे एक तो यार ये लोडिंग आ गया। आई फील लोगों को अपना फोकस परफॉर्म से लर्न पे शिफ्ट करना। एग्जैक्टली यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। लर्न नहीं करना है किसी को। पब्लिक को क्या लगता है इंडिया नेशनल क्वालिफायर जीत गए, अभी जा रहे हैं हम रिप्रेजेंट करने, तो हमें सब आता है। अबे वही सड़े हुए डबल पीक, वही सड़ा हुआ वहाँ से तू बैट कर ले। अबे ये सब तो उन्होंने 10 साल पहले 5 साल पहले किया हुआ है। He is telling the truths actually. क्यों? क्योंकि अपने को पता है अपने में इतना दिमाग नहीं है। आप क्यों लगता है कि इंडिया से कभी भी कोई टीम अपने 4 लोग देख रहे होंगे इस मैच देखते हैं सब, उसने वहां से बिना किसी प्लेयर को ड्रॉप करे उन्होंने फॉलो अप राउंड जीता है। स्टार्ट आ गया। इसका मतलब जब वो तीसरे राउंड के अंदर जाएंगे, अल्टीमेट काउंटर्स भी बढ़ेंगे, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और एक बढ़िया शुरुआत उनको मिल चुकी है माइंड मैप की। आउटलॉ अभी भी ले रखी है, जैसे ड्रैगन और ल्यू दोनों परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये साइड रीटेक पे खेली जा रही है यहाँ पर, और मोटिव ने लॉन्ग पे एक प्ले भी बनाया है जिसका कोई फायदा अभी तो नहीं होगा, लेकिन जरूर ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। कदीरी फ्लैंक के ऊपर बिल्कुल मुस्तैद, बढ़िया फ्रैग है सुशी बॉयज के ऊपर, और अब मुझे लगता नहीं है स्ट्रिंगर से इतनी ज्यादा वैल्यू मिलने वाली। और 4 प्लेयर्स ने टीपी किया है, ऑल 5 थ्रू हुक का। लॉन्ग पे वेरा अकेले हैं, लेकिन इन्होंने एक फ्रैग निकाल के थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर किया। डबल बहुत अच्छा सैचुरेट, और फिर फॉलो अप। वेरा ने नाक में दम कर दिया है किंग के। 3 चीजों के अंदर दिक्कतें जरूर आएंगी, हाँ? बट इस बार किंग ने शुरुआत अच्छी करी है, फ्रैग्स भी बने निकाले, और किंग विद द ल्यू द फाइनल नेल इन द कॉफिन। उन्होंने अपने बाय राउंड को अपने फेवर में कन्वर्ट जरूर किया, बट एक कीमत बहुत मोटी चुकाई है यहाँ पे। उन्होंने 4 प्लेयर गंवाए हैं। भली जीत यहाँ पर हुई है किंग की, बट कहते हैं ना एक छोटी जीत मौजूद थी वहां पर मोटिव की भी। वो 4 प्लेयर पिक ऑफ करना ये छोड़ देगा, ये दर्द जरूर करेगा। जी हाँ, वो मोटिव वो देख सकते हैं आप कोच कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वेरा ने गिफ्ट करके दिया था टीम को राउंड, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई मोटिव। 3 फ्रैग्स निकाल रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें सिर्फ स्टिंगर और 5 प्लेयर्स उसमें रश डाउन कर रहे हैं। बट चलिए वेन इस आउटलॉ के साथ थोड़ा सा एग्रो खेलना चाह रहे थे, अब डबल सैचल का शिकार होने वाले हैं जज। निकले जरूर थे वो बिला ने जिसको खोजा जा रहा था, लेकिन फ्लेयरिंग ने इन सब के बीच में इकाना पे एक फ्रैग, ल्यू कार्ड आया ट्रेड। लू ने उस डबल सैचल यूज करके जो यू हॉल का कंट्रोल छीना है, काबिल तारीफ जरूर रहेगा। एंड सडनली डिफेंडर्स दे विल बीन रियली पैसिव, बट ड्रैगन विद दैट शॉट, गार्डियन का बढ़िया शॉट निकाला ड्रैगन वेन पे, और उनको गेम से निकाला है। बट सुशी बॉयज दे नीड टू स्टेप अप। अब 2 खिलाड़ी बचे हैं, सामने 4 खिलाड़ी मौजूद हैं। इस राउंड के अंदर कमबैक करना, स्कोर को लेवल करना किंग के लिए आसान रहेगा, बट भाई मोटिव उनके प्लान्स अलग थे। बट ये देखिए नाइटफॉल भी 4थे राउंड के अंदर अल्टीमेट कमिट हो रही है फ्रिज, और सुनाई नहीं देगा अब आपको कुछ भी।
मिनिमाइज टाइमिंग लेके अंदर तो गए, लेकिन सुशी बॉयज ने वो फ्रैग निकाल दिया है। स्पाइक ऑलरेडी हाथ स्टिक कर दिया गया है, किसी को कुछ पन्ने नहीं पड़ रहा है क्योंकि नाइटफॉल अल्ट है और सुशी बॉयज इन सब के बीच में नाक के नीचे से राउंड चुरा के ले गए हैं। 2v4 के अंदर ये आउटकम सोचना वाज आउट ऑफ द माइंड, और कैसे तैसे कर स्कोर को लेवल अप करा है। अब ये राउंड चुप सकता है ई किंग को, बिकॉज उन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से करा। लू का बढ़िया कंट्रोल था, यू हॉल का पूरा एरिया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवाया, बट इट वाज नॉट इनफ। टायरन एंड सुशी बॉय ने जो स्टेबिलिटी दिखाई है वो इस राउंड के अंदर काफी मजेदार अच्छा गेम खेल के दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, मतलब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उस अल्ट से सारे के सारे प्लेयर्स हिट हुए तो किसी को कुछ सुनाई देगा नहीं। इवन दो एक 2v4 था, रिजल्ट अपने फेवर में लेकर गए और ईकिंग के कोच ने तुरंत टाइम आउट कॉल किया है। उन्हें पता है कि ये ऐसे राउंड्स है ना जो आप ओपोनेंट को दे नहीं सकते। हाँ, माना दिवाली आ रही है और गिफ्ट देना एक अच्छी बात है लेकिन ऐसे गिफ्ट अगर आप देंगे तो ओपोनेंट बहुत खुश होकर सीरीज दे जाएगा आपके हाथों से। टाइम आउट टाइमली लिया गया है, बिकॉज एशियन के अंदर 4 से 5 राउंड के बाद टाइम आउट लिया गया था। 5 से 6 राउंड में लोटस में भी लिया रिच को मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। 2-2 की स्कोर लाइन, 4 राउंड पे ही यहाँ पे टाइम आउट ले लिया गया है। रिच को मैंने पर्सनली टेक्स्ट डाल दिया है, बिकॉज उनको पता है कि अगर अभी हमने संभाला नहीं, अगर हमने अभी अपनी गलतियों पे काम नहीं करा, देन सिचुएशन और वर्सन आउट हो सकती है। इट्स बेटर कि जब तक टाइम है हम चीजों को संभाल कर हम आगे बढ़ जाए। बट ईकिंग दे शुड नॉट फॉरगेट कि भाई लोटस के अंदर इन्होंने सामने वाली टीम के ईंट से ईंट बजा दिए थे। दे कैन डू इट अगेन, बट थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा कंट्रोल, और जो उन्होंने प्रैक्टिस करा है उसको ही रेप्लिका करना है। बट 3-1 की स्कोर लाइन, किंग एक टाइम पे लग रहा था कि बराबर होगा। 4 लोग देख रहे हो यार, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब। ये 4-5 की वॉचिंग ऑन द कमबैक अच्छी लग रही है मेरे को। और इस राउंड में तो पैसे भी नहीं है। दोबारा से बीलॉन्ग के राउंड वो प्ले बनाने की कोशिश, इतना ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं है लेकिन उस वजह से पेस अप कर दी गई है। और ये देखिए सैचुरेट, क्या हौले हौले हवा से उड़ते हुए जा रहे थे बेचारे लियू। एक बहुत अनलकी इंटरैक्शन, कदीरी काना 2 अकेले खिलाड़ी और मुझे लग रहा है एक फ्लॉलेस की तरफ बढ़ रही है मोटिव। और ये सबसे खराब चीज होती है वैसे क्रैट, आप टाइम आउट लीजिए और ओपोनेंट आपको फ्लॉलेस मार दे। हाँ, माना कि शायद इस राउंड के लिए नहीं था वो टाइम आउट, बट स्टिल थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग जरूर होता है ये। यू नो डिफेंडर्स के दोनों खिलाड़ी लॉन्ग की तरफ मौजूद थे। फिर मुझे एक टाइम पे लगा था कि शायद स्पाइक प्लान का जो मिनिमम है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, बट वहीं पर जो पहला मिनिमाइज का पिक था और उसके बाद लू को पिक ऑफ करा तो वहां पे कोई शॉट में ये क्या चल रहा है, क्या वो कुछ और कर पाएंगे? अफसोस नहीं, वेरा मौजूद थे, उनकी फैंटम निकानो को वो गेम से बाहर निकाला। और चौथा राउंड मोटिव केस से में आ चुका है। अब थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, अब टीम के अंदर स्थिरता दिख रही है, अब गलतियां कम, परफॉर्मेंस ज्यादा दिख रही है। जी हाँ, वेरा ये सैचुरेट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है ये खिलाड़ी। वो हॉन्ट भी थोड़ा लेट ही आया, ये प्लेयर जब तक देख पाते कि कौन रिवील हो रहा है तब तक तो एलिमिनेट हो चुके थे। चलिए, अब इस राउंड के लिए वो टाइम आउट लिया गया है। इस राउंड के अंदर जीत हासिल करना किंग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इकाना के पास अपना अल्टीमेट भी मौजूद है, कदीरी भी सिर्फ 2 और दूर है, ल्यू को भी अल्टीमेट मिल सकता है, इवन ड्रैगन इज वेरी क्लोज, लेकिन इस तरीके से आप नहीं चाहोगे कि आपका अल्टीमेट ऑनलाइन आए। और ये वो खिलाड़ी है फ्रिज जो एक आप कहते हैं ना कंट्रोलर है, आपको पता है कि आपका मोलोटोव आपकी अल्टीमेट कितनी कारगर प्रूव हो सकती है इस राउंड के अंदर। अफसोस एग्जैक्टली अब बिना ड्रैगन बिना ब्रिमस्टोन के ये राउंड खेलना पड़ेगा। या एक ऐसा कंट्रोलर जो आपके लिए जहां चाहे वहां स्मोक डाल सकता है, लेकिन अब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए अल्ट का काउंटर अल्ट से किया गया, लेकिन मेरे भाई टीपी करके आगे पहुंचे, लेकिन वेरा ने तुरंत ट्रेड लिया है 3v4। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल वाली रहेगी, लेकिन मिनिमाइज तुरंत वापस आए टीम को हेल्प करने के लिए। वेन ने एडवांटेज क्रिएट किया है, लेकिन 3v2 अब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वेन प्लांट भी डिनाई किया है, प्रेशर क्रिएट अभी भी करने की कोशिश है। 38 सेकंड ऑन द क्लॉक, बी साइड बिल्कुल खाली है। अगर टीपी करके टीम निकल जाती है तो जी हाँ, बी साइड के ऊपर एक फ्री प्लांट मिलेगा, लेकिन पोस्ट प्लांट खेलने के लिए कुछ है नहीं। और अगर आप काउंटर पे देखें तो मोटिव उनके पास वेन का अल्टीमेट है, स्टायरॉन, हॉन्ट, सुशी बॉय, स्मोक, रीटेक करना ज्यादा कोई मुश्किलों वाला काम होना नहीं चाहिए। मेरा बेटा
कितनी दूर जा रहा है। खाना अच्छे से खाना, किसी गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना, घर पे रोज फोन करना, और वहां से ना मेरे लिए एक आईपैड। पोजीशन से मल्टीपल फ्रैग निकालते फायदा हो सकता है, बट वेन विद द डायमेंशन ड्रिफ्ट उन्होंने पूरे टाइट्स बदल दिए यहाँ पे और मल्टीपल पीक्स का शिकार होते हुए दिखे गाना। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा जरूर था कि शायद किंग इस गेम के अंदर कमबैक जरूर कर पाएंगे, बट बनाए होंगे। बाइंड के अंदर हम सबको पता है कि अटैकर्स के पास अगर मोमेंटम आ जाता है देन इट बिकम रियली टफ फॉर डिफेंडर्स टू होल्ड डाउन। बट अफसोस की बात ये है कि अब तो डिफेंडर्स का ही बोलबाला लग रहा है और अटैकर्स के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। शॉट एग्जैक्टली, ये जो छोटे-छोटे राउंड्स हैं ये आपको ना आगे चल के बहुत परेशान करेंगे। ये हेवी इन्वेस्टमेंट आपने अल्टीमेट्स कमिट करी थी, पर बावजूद इसके राउंड हाथ नहीं आया और अब आप इको पे आ चुके हैं। 2 स्टिंगर, 3 शेरिफ्स, ई किंग, अब इनके लिए परेशानी भरा वाला राउंड है। प्लेयरिंग मेकिंग श्योर कि ए शॉट से किसी भी तरीके का फास्ट पुश ना है, लेकिन लियो वो मानने वाले कहाँ हैं? सीधा शो स्टॉपर लेके आगे निकल चुके हैं और शो स्टॉपर लगा यूरू पे और फ्री फ्रैग वेरा के पास। बट मैप के हर एक कोने पे मौजूद है यहाँ पे फ्रिज, हर एक कोने पे मौजूद है। बट लू को देखे ना, उन्होंने शो स्टॉपर यूज किया, स्टिंगर से पिक ऑफ करा, कुछ विलेज ने जो फॉल बैक करा वो वहीं पे मौजूद थे। बट सडनली इस राउंड के अंदर जिस तरीके से समेट के रख दिया है इस लाइनअप को, और मोटिव के पास कोई कारगर कोई जवाब नहीं है उनके पास, और वो देखते रहेंगे। एंड लियो विद द ट्रिपल, नाइस ट्राई, 50 राउंड निकाल के दिया और काफी खूबसूरत स्पेक्टेकुलर फैशन में। हे पीछे क्यूटी कौन थी? ओह जी हां, क्या राउंड खेला गया है यहाँ पर किंग की तरफ से। लियो वो 2 फ्रैग्स, पहला वाला मुझे 1 सेकंड को लगा कि शायद कहीं बेट ना हो जाए वेले के डबल डैश पे, यप, लेकिन बावजूद उसके यू हॉल गए, फ्रैग निकाला, वेरा ने जैसे ही टीपी बैक काइंड ऑफ दोनों राउंड्स ऐसे ही गए, एक थ्रिफ्टी और एक एंड में 1v1 तक गया था। एग्जीक्यूट ए साइड पे काम करता हुआ और किंग को दूसरा राउंड दिलाता हुआ। यहाँ पर जो वेले खेल रहे हैं यहाँ पे, वेरा उनको आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ऑलरेडी वो मौजूद आ चुके हैं। देखिए मिनिमाइज फिर से इस गेम का दूसरा डायमेंशन ड्रिफ्ट है और वो यूज कर फायदा जरूर निकालना चाहेंगे। बट ये देखिए कैसे पुश कर उनके हाथ के अंदर, बट उन्होंने वो कनेक्शन बनाया, अफसोस काफी नहीं था। फ्लेयरिंग ने करारा जवाब दिया, मिनिमाइज को पिक ऑफ करा और एक कर अब किंग के खिलाड़ी भी यहाँ पर गुट्टे टेकते हुए दिखेंगे। वेरा ने एक और फ्रैग निकालकर अपनी टीम को एडवांटेज दिला। के अंदर आखिरी 2 खिलाड़ी मौजूद है। कादरी ने डैमेज लिया बट वेरा के हत्थे चढ़ गए 3v2। बट कब तक? अभी भी 3 खिलाड़ी बचे हैं मोटिव स्पोर्ट्स के, किंग के 2 खिलाड़ी। कादरी की एचपी कम है बट मोमेंटम देखिए, राउंड स्थिर चुका है, राउंड स्टेबल हो चुका है। कादरी वो होल्ड कर रहे हैं। शॉट फाइनल पिक मोटिव स्पोर्ट्स, वो कहीं ना कहीं बीच में से एक फ्रैग निकालते हैं, राउंड जीतते हैं और ये आधा दर्जन फिर से बोर्ड पे लगा दिए। बाइंड का डिफेंसिव साइड काफी बार मुश्किल हो जाता है जब सामने 2 डुएलिस्ट आते हैं, लेकिन मोटिव के लिए नहीं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहे हैं। बट अभी भी 6-2 का स्कोर लाइन है। किंग कंपटीशन के अंदर बरकरार टिकी हुई है। इस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं मल्टीपल खिलाड़ी एक ही तरफ मौजूद हैं। शावर की तरफ 2 खिलाड़ी थे, अब फॉल बैक करके वापस आएंगे, बट वेरा का ये एग्रेसिव एंगल फायदेमंद रहेगा। कदीरी के साथ एक 1v1 डूल ऑफ था जिसके अंदर वेरा ने कदीरी को पिक ऑफ करके एडवांटेज दिलाई है, बट हुक्का के बाहर भी एक पोटेंशियल फाइट हमें देखने को मिल सकती है। इट्स बिटवीन इकाना एंड द लू, स्टारॉन एंड लू, माय बैड, बट स्टारॉन इज स्टिल ऑन दैट एंगल। एक सिंगल फ्रेम पर वो टिके हुए हैं, बट ली को एंटिसिपेटेड है कि वो शायद वो हुक्का पुश करेंगे तो फायदा उठा पाएंगे। अटैकर्स दे जस्ट वेटिंग कि डिफेंडर्स अगर कुछ एग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे फायदा उठाएंगे, बट फ्लेयरिंग उन्होंने स्टारॉन की मदद से एक फ्रैग जरूर निकाला, बट लू वो वहां पे मौजूद थे। जो डूल थोड़ी देर पहले हो सकता था इस बार हुआ और इस बार लू ने जीत हासिल करी है। स्पाइक का कमिटमेंट किस साइड पर होगा अभी तक बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भाई देखिए ये वो थोड़े से प्लेस है जो मैं और देखना चाहूंगा मिनिमाइज की तरफ से, लेकिन बात ये है वेन को आप इस कॉर्नर से कैसे करोगे? शॉट लिया है, टीम एक्सपायर हो गया, लेकिन ऐसे टाइम पे अब
मिनिमाइज ने ट्रेड जरूर निकाला है, 5 लोग देख रहे हो, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो गाइस। सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है एमटीवी के लिए। मॉली अवेलेबल, वेरा भी डबल डैश करके साइड का कंट्रोल ले सकते हैं, लेकिन अब मोटिव के लिए नंबर्स गेम को खेलना ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। क्रैट इन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। शुभ करी थी ड्रैगन कुछ और करते उनको भी रंगे हाथ पकड़ा फ्रिट्ज। एंड 7वां राउंड मोटिव ई स्पोर्ट्स के पास। सी और ओशियाना की रीजन की जो फाइट है, थोड़ी देर के लिए ओशियाना ने लोटस पे अपने फेवर में किया था, बट बाइंड तो एक अलग ही कहानी बता रही है। मजा आ रहा है लेकिन गाइस, मजा आ रहा है लेकिन लेट्स इट। 9-3 है, 10-2 की स्कोर लाइन से नीचे ये टीम नहीं रुकेगी। 9-3 भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत खराब हाफ रहेगा। अगर आप किंग है तो आप बेहतर चाहोगे उससे रिजल्ट। ये वो मोमेंट था जहाँ पर वेन चाहे शॉट मारते टीपी करते तो हो जाता, बट चलिए उससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सुशी बॉयज अपने टीम की बैक कवर करने के लिए बिल्कुल तैयार। या वो आप अब चेहरे देख सकते हैं थोड़े से उतर रहे हैं यहाँ पर। अब ई किंग के लिए कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है क्योंकि राउंड्स नहीं आ रहे। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान रखना है क्रैट, मोटिव ने भी एक ऐसे ही स्कोर लाइन से डिफेंसिव हाफ के अंदर वापसी करी थी लोटस पे। अगर 3 राउंड लगातार वापस मिल गए, मैं फ्रिट्ज के साथ एक्चुअली चैट पे हो गई, हो जाएगा, तो उस वजह से टाइम आउट काफी ज्यादा क्रूशियल। दोनों चीजें बदल सकती हैं और ये दूसरा टाइम आउट है। फ्रिट्ज आप एक हाफ के अंदर 2 टाइम आउट ले सकते हैं पर टीम है। हाँ जी, पूरे गेम में 2 टाइम आउट। तो और दोनों टाइम आउट इतनी जल्दी यूज करना आपको लगता है कि ये फायदेमंद रहेगा उनके लिए? बिकॉज ऐसी क्या सिचुएशन होगी, क्या डिस्कस करेंगे? बिकॉज मोमेंटम से हार रहे हैं, कॉन्फिडेंस से हार रहे हैं, वो जो 1v1 डूल्स हो रहे हैं जो वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो वहां पर हार रहे हैं। जो आपने शुरुआत में देखा, वेरा और कदीदी की फाइट के अंदर कोई भी यूटिलिटी इन्वॉल्व नहीं थी। ऐसे डूल्स के अंदर अगर वो हारेंगे देन मैप पे पकड़ बनाना कमजोर ही होगा। और कोच का यही काम होता है क्रैट कि उनको याद दिलाना कि कदीरी वो फाइट लेना जरूरी नहीं है। ऐसे गर्मा गर्मी में कभी कभी हो जाता है प्लेयर्स के साथ कि थोड़ा सा बह जाते हैं भावनाओं में, और अब शायद वो सोलो फाइट्स आपको ज्यादा देखने को ना मिले। अच्छा फ्लैश, रेन को थोड़ा सा पीछे फॉल बैक तो करवाया, लेकिन वो सैचुरेट देखिए। अगर ऐसी यूटिलिटी 4-4 प्लेयर को लगने लग गई फिर तो आप बेहतर यही रहेगा निकल जाइए इस पोजीशन से। फॉल बैक करेंगे वापस से ए साइड की तरफ। सिर्फ शेरिफ्स है तो आप एक लकी ओपनिंग ढूंढ रहे हैं पहले, और वो मिलती है उसके बाद आप राउंड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एमटीवी को देखिए तो ये बिल्कुल ए साइड गिव अप करके खेल रही है ये टीम। सिर्फ एक प्लेयर है यू हॉल और बाकी सारे प्लेयर्स बहुत डिफेंसिव पोजीशंस के ऊपर, और इसी वजह से साइड के अंदर उनको एंट्री मिली है। क्या होल्डिंग है, पोटेंशियल है रे। ही इज अ ब्यूटीफुल प्लेयर। एक फ्रैग निकाला, फॉल बैक करेंगे, वो मैन एडवांटेज वो नहीं गंवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किंग ना पूरे टाइम एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसी रहे, पूरे टाइम प्रेशर रहे यहाँ पर। फेयरिंग शॉटी से भी अपना क्या होल्डिंग पोटेंशियल दिखा रही है टीम मोटिव। फ्रैग निकाले, अकेले मिनिमाइज बचे हैं। आखिरी कुछ सांसों के अंदर भी शेरिफ के साथ जलवे जरूर बिखेरना चाहते हैं, ज्यादा देर उनका भी बचना नहीं रहेगा। बट फेयरिंग उनको पता है उनकी एचपी का आसान होने वाला नहीं है। हॉन्ट का इंतजार करा, हॉन्ट ने टेंशन ग्रैब करी और फ्लेयरिंग ने उनकी जान खींच ली। एक एक राउंड कर कर वो स्ट्रिप डाउन कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस को, जो लोटस के अंदर कमाया था वो सब कुछ छीन लिया बाइंड ने। जी हाँ, देखिए कितना बेहतरीन, मतलब ये 1-2 जो प्ले है कि बैक साइड पे प्लेयर है, मुझे पता है अगर मैं शॉटी से पीक करता हूँ तो मेरे पास वो एडवांटेज रहेगा यू हॉल के अंदर। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही कहीं ना कहीं एक अच्छा खिलाड़ी अपने दिमाग के अंदर रखता है। और फिलहाल एमटीवी हर एक चीज का भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए मिनिमाइज इस राउंड के अंदर उनके पास वो डायमेंशनल ड्रिफ्ट, बाकी खिलाड़ी ल्यू भी काफी ज्यादा करीब है, इकाना भी काफी करीब है, और ड्रैगन का ये ओपनिंग डुएल फाइनली वो ऑपरेटर शटडाउन हुई है। फिर एक एडवांटेज, वो फर्स्ट ब्लड ड्रॉ करने में किंग कामयाब हुए हैं। बट क्या यहाँ से राउंड कन्वर्जन आ सकता है क्रैट? सबसे बड़ा चुनौती यही रहने वाला है चेक नहीं किया किंग के लिए। यू नो दे गॉट द टीम मैन डाउन, फायदा उठा जरूर सकते हैं, बट ये देखिए मिनिमाइज इस खिलाड़ी को रोकना इस राउंड में तो असंभव लग रहा है। अब 3v5 का सिचुएशन है, सडनली जो हमारी अटैकर साइड टीम है वो बी साइड की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और बी पे 2 है, बाहर 4 प्लेयर थे, अब फॉल बैक करके बी लॉन्ग जा रहे हैं, बट बी साइड में भी 2 प्लेयर मौजूद है। अब वेपन ये एडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, बट हुक्का से जो रैप अप सिचुएशन बन सकती थी वो वेस्ट हो गई है। बट ये वेले की अल्टीमेट है, कब तक फायदा उठा सकते हैं? फायदा उठाते उससे पहले उनको गेम से भाई 3-4 मार सकता है। एडवांटेज और बनाई गई है। ये देखिए फ्लेयरिंग
ओवरक्राउड नहीं कर सकते, वो गलती नहीं कर सकते, उन्होंने फ्रैग निकाला, वो रीपिक करके अपनी गेम को जरूर खराब करते हुए दिखेंगे, बट ऑक्टेगन से साइड की तरफ बढ़ चुके हैं। अब अकेला खिलाड़ी फ्लेयरिंग वो ऑक्टेगन से आएंगे और सब जो हमारे अटैकर्स हैं प्लांट करने के बाद उसी एंगल को कॉन्स्टेंटली टटोलते हुए दिखेंगे, बट लो क्या वो खिलाड़ी कुछ और कर पाएगा? फ्लेयरिंग के लिए राउंड आसान नहीं रहने वाला। तीसरा राउंड किंग का ऑन बोर्ड कंफर्म हो चुका है। आई एम जस्ट क्यूरियस कि फ्लेयरिंग को इस सिचुएशन के अंदर भी कुछ और करके दिखा सकते हैं अपनी टीम के लिए। जी नहीं, जवाब मिल गया है क्राट, और ये एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे राउंड आया है किंग के लिए, क्योंकि अब इस आखिरी राउंड के अंदर हाफ के एक अल्टीमेट तो आपकी शो स्टॉपर तैयार ही है और उसके अलावा 2 और अल्ट्स तैयार होने वाली है। बहुत अच्छी टाइमिंग पकड़ी, वेरा को लगा कि उन्होंने हर एक खिलाड़ी को हिट कर दिया उस अल्टीमेट से, जो कि था नहीं। एक प्लेयर बच गए थे जिन्होंने वो फ्रैग निकालने में किसी भी तरीके की गलती नहीं करी और इवेंचुअली वो राउंड निकालने में कामयाब हुए हैं ई किंग। उनके फेस पे दिख रहा है भाई शो स्टॉपर नाइटफॉल भी तैयार होने वाला है, ड्रैगन के पास भी ऑर्बिटल स्ट्राइक आ सकती है अगर एक ऑफ मिल जाए, लेकिन काउंटर एमटीवी के पास भी कुछ बड़े अल्टीमेट्स तैयार हैं अगर ड्रैग के लिए। चलिए क्रूशियल पिस्टल 9-3 ई किंग को थोड़ी सी भी उम्मीद रखी है तो पिस्टल जीतना पड़ेगा, वरना ये गेम तो मोटिव का ही है। क्राट कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो अगर पिस्टल राउंड मोटिव जीत जाती है देन इट्स डन एंड डस्टेड, बिकॉज ये हमारा तीसरा मैप है इस सीरीज का और हमने तीनों सीरीज में देखा है कि अगर पिस्टल और मोटिव ने जीता है फॉलो अप राउंड जीतने में ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं करते हैं। 11-3 की स्कोर लाइन चुभेगी यहाँ पे किंग को, बट काफी एग्रेसिव खेलने की कोशिश थी, बट मिनिमाइजेशन टेलीपोर्ट करके फॉल करेंगे, वो पूरी अटेंशन ग्रैब करी और उन्होंने भी अब आपको फॉल बैक करा लिया है। बट स्टायरन को बैकस्टैप करना चाहते थे, बट देखते देखते डिफेंडर्स ने अपने दो गवा दी है। कादरी होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, अगर कादरी ने पिक ऑफ निकाला तो बातें बदलेंगी, बट अफसोस एक एक कर किंग अपनी पूरी कैवलरी गवा चुके हैं। ड्रैगन जो अकेले खिलाड़ी बचे हैं, नेओराफिक्स बहुत ज्यादा दबे मामूल लग रहा है। हर एक कॉर्नर पर प्लेयर मौजूद है, मल्टीपल एंगल्स का शिकार बनेंगे और वेन की घोस्ट यहाँ पे जस्टिफाई करेगी और 10वां राउंड ऑन द बोर्ड फॉर द टीम मोटिव स्पोर्ट्स। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है फ्रिज कि इस वक्त ई किंग का जो पूरा मोटिवेशन है ना वो बिल्कुल गिर चुका है। एंड अब ये देखिए स्टायरन का डबल वाज ब्यूटीफुल, दैट बर्स्ट वाज परफेक्ट, उसके बाद जो डबल फ्रैग निकाला इट वाज नाइस। मोटिव को इस वक्त इस सिचुएशन से रोकना, इस मोमेंटम को तोड़ना, मुझे तो नहीं लगता कि अब किसी सिचुएशन में पॉसिबल रहने वाला है। स्टिंगर ओनली किंग कोशिश जरूर कर सकती है, बट एडवांटेज तो यहाँ पर मोटिव के पास अच्छी खासी दिखती है। बट वेरा उन्होंने स्पॉट करा स्मोक के अंदर, पहला फ्रैग भी निकाला, बट फेयरिंग ट्रेडिंग उनकी कोशिश भी लाजवाब थी, बट इन दी एंड इट वाज टीम मोटिव स्पोर्ट्स जो अभी भी इस मैप में इस राउंड के अंदर एज अ लीडर हमें दिख रही है। दिमाग लगा, बट क्योंकि शुरुआत वो मोटिव ने करी थी, एक प्लेयर के एडवांटेज के ऊपर पहुंच गई है ये टीम। इकाना की ये स्टिंगर सरप्राइज एलिमेंट था, वेन शायद पहले एंटिसिपेट ना करते, और अब तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। क्लोज एंगल, इकाना की अच्छी फाइट, लेकिन वेन ने सीटी पे कादरी के एलिमिनेशन के साथ इस राउंड पे एमटीवी का थप्पा लगा दिया है। 4 एचपी है सिर्फ इकाना के पास, फ्री फायर में एंट्री करते हुए, और मोटिव मात्र 2 राउंड दूर इस पहले मैप को अपने नाम करने से। मतलब मुझे इस चीज का डर था, बिकॉज़ फिर जब हमने बात ही करी थी अगर पिस्टल राउंड निकाल लिया देन फॉलो के अंदर मोटिव इतना चोक नहीं करती है, और 11-3 की स्कोर लाइन के बाद अच्छी खासी टीम के भी ना दमखम खत्म होते हुए दिखते हैं। वेन यू नो इफ दिस गाय इज ऑन यूरू परफॉर्मेंस तो आएगी, और इस बार भी आप देख सकते हैं 16-6 कैसे अपनी टीम को लीड करे। 16-6 का स्कोर लाइन है, अल्टीमेट अभी उनकी 4 पॉइंट दूर है। अभी अपने आप को यू हॉल की तरफ उन्होंने सिचुएट करा रखा है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टीम ए शॉट साइड में अंदर जरूर घुसना चाहेगी। बट ड्रैगन विद दैट गार्डन ही वाज देयर, उन्होंने मोटिव के जो वेरा को उनको स्पॉट करा, उनको गेम से बाहर निकाला, बट स्टायरन उन्होंने करारा जवाब दिया और रन एंड गन कर दोनों डिफेंडर्स को यहाँ पे चकनाचूर करा, गेम से बाहर निकाला। रिकाना एक क्लोज एंगल पहले तो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो फ्रैग निकालने में कामयाब। उन्होंने देख लिया कि फ्लेयरिंग उनको मार्क कर रहे हैं, तो धीरे
2v3 की सिचुएशन अभी भी आसान रहेगी नहीं और गार्डियन का इस्तेमाल करके स्टायरॉन क्या चल रहा है? फिर से बैक एंड फोर्थ ट्रेड और अकेले पड़ गए इकाना को पहले ही देख लिया गया था ए शॉट के अराउंड और मुझे लगता नहीं है मोटिव अब ज्यादा हाथ से जाने देने वाली है ये राउंड को। अब और किस चीज पे हम डिस्कशन कर सकते हैं फ्रिज? अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? अब इकाना बचे हैं, स्पाइक डिफ्यूज करने का सपना उनके पास जरूर है, पर जो दो खिलाड़ी बचे हैं वो दोनों शावर्स के आसपास हैं और डबल एंगल बना रखा है और उन दोनों को अंदेशा नहीं है कि ये प्लेयर मौजूद का है। बट यस फाइनली स्पॉटिंग जरूर हुई, शुरुआत करी इकाने विद द स्टिंगर, बट जब फ्लेयरिंग का भी स्टिंगर से ही आएगा और ऑन द बोर्ड। मतलब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता हूँ, डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि लोटस के अंदर जो ईकिंग हमें देखने को मिली थी, ये ब्लाइंड में ईकिंग तो नहीं है, ये तो कहीं खोट सी गई है, कहीं से मिट सी गई है। लगता है प्रेशर क्राइड अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को सकम करवा देता है और ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मोटिव राउंड पे राउंड लगाती चली गई, प्रेशर क्रिएट करती चली गई किंग के ऊपर, वो बस कभी उभर ही नहीं पाए उस प्रेशर से। 16-7 वेन, मुझे लग रहा है वेन मिसिंग थे लोटस पे, इस वजह से वो मैप जो है इतना वन साइडेड चला गया, तो शायद उसमें भी कंपटीशन आपको देखने को मिलता। फिलहाल थोड़ा सा मेंटल के साथ खेलने की कोशिश, टेलीपोर्ट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट कराए जा रहे हैं एमटीवी के दिमाग में। लेकिन आप एमटीवी की पोजीशन देखिए क्रैट, स्पॉन से बाहर ही नहीं है ये टीम अभी तक। मतलब वेन सेकंड गेम के अंदर ओमन खेल रहे थे और आपको भी पता है व्हेनेवर यू प्लेइंग अ कंट्रोलर नो यू हैव सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ओवर शोल्डर, आप ओवर एग्रेसिव खेल नहीं सकते, आपकी यूटिलिटी के बिना आपका इंपैक्ट बहुत कम हो जाता है, तो जिम्मेदारियों के तले दबे हुए थे। बट अब फिर से जब मौका मिला योरू के साथ आने का, इस प्लेयर ने फिर से करके दिखाया अपने आप को। स्टारॉन ये देखिए इस अल्टीमेट ऑफ उठाने के बाद उनका नाइटफॉल यहाँ पर आ चुका है और इस अल्टीमेट के बलबूते पे वो चाहेंगे कि वो माइंड को वाइंड अप कर कर ये सीरीज अपने नाम करें। चलिए साइड बिल्कुल खाली है अब फॉर द टेकिंग। ओ अंडर हुक का इस प्लेयर को कैसे देखना भूल गए। सीटी से ल्यू ने भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, मिनिमाइज निकले जरूर है उन्होंने योरू को गेट क्रैश करते हुए, लेकिन एडवांटेज बड़ी देर बाद सही बट किंग बनाने में कामयाब हुए। वेन लगातार स्पैम कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये स्प्रे करेक्ट हो जाए और आई थिंक देखा गया बिल्कुल स्पॉटिंग हुई है। इकाना ने वो फ्रैग निकाला है और बड़ी देर बाद ये चौथा राउंड किंग ने बोर्ड के ऊपर लगाया है। मतलब एक राउंड और मिलेगा यहाँ पे किंग को जीने के लिए इस बेस्ट ऑफ 3 के अंदर। बच गया, अच्छी करी थी, कोशिश अच्छी करी थी, पर अफसोस इकाना वाज मौजूद, इकाना वहां पे मौजूद थे और उन्होंने इस राउंड को अपने फेवर में कन्वर्ट करा। बट उन्होंने इस सिचुएशन में भी काफी प्लेयर गवाए हैं। कदरी नो डाउट एमवीपी रहेंगे, अंडर हुक का जिस तरीके से उन्होंने खेला, 2 बढ़िया हेडशॉट टिकाए और मोटिव स्पोर्ट्स को थोड़ी देर के लिए तो अचंभित जरूर किया था। बट 12-4 की स्कोर लाइन अभी भी दिल्ली काफी ज्यादा दूर है, उनको लगातार 8 राउंड निकालने पड़ेंगे तब जाकर इस टीम को ओवरटाइम के दर्शन होंगे। अब उस चीज के होने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी की अगर बात करते हैं, मोटिव ने इतने राउंड निकाल रखे कि इकोनॉमी उनकी फुल पावर पैक्ड है। बट ल्यू काफी जल्दी उन्होंने डिस्टेंस क्लोज अप करा, बट वेरा को ऑफ गार्ड पकड़ा गया और ड्रैगन का जवाब बढ़िया था और एक एक कर कर किंग यहाँ पे स्टॉम्प कर रही है मोटिव स्पोर्ट्स को। कंट्रोल लेते हुए राउंड का पेस को खुद सेट किया उन्होंने, बीलोंग पे जाके पहले एक प्ले बनाने की कोशिश करी, वो हॉर्न तोड़ा जरूर, रेडी थी एमटीवी उस प्ले के लिए, लेकिन स्मोक के अंदर एक क्रिमिनल छुपा हुआ था। लॉन्ग पे वो डबल डैश करते हुए फ्रैग मिला नहीं वेरा को और काउंटर में पड़ गई नाइटफॉल। कुछ इंटरैक्शन उनके अगेंस्ट गए हैं और मोटिव अभी भी थोड़ा और समय लगेगा इनको इस गेम को क्लोज आउट करने के लिए। 2v4 साइड के अंदर अकेले कादिरी है, लेकिन अभी तक वो ही इज ऑलवेज गुड फॉर 1, नॉट इन दिस राउंड। तो होल्ड अप फ्लेयरिंग को अगर एक फ्रैग 3 दूर है अभी भी अल्टीमेट से, अल्टीमेट तो नहीं आ रही इस राउंड में, लेकिन ये 3v2 डुएबल है क्योंकि वेन के पास अपना अल्टीमेट मौजूद। नो फ्रेंड्स, ये फ्लेयरिंग का इतना ओपन के अंदर स्पॉट होना और वो डूल लेना मुझे समझ सा नहीं आया। और थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि कदीरी यूजी डूल हार रहे हैं, बट इस बार कदीरी ने उस डूल पे मौके पे फायर जीत हासिल करी है। अब तीनों डिफेंडर्स आगे आ रहे हैं,
वेन he needs to go big. पहला स्पॉटिंग हुई, पहला फ्रैग निकाला, बट मिनिमाइज was there with the guardian. दोनों फ्रैग आउट करे वेन एंड फेविंग को, और 5वां राउंड किंग ने अपनी टीम के लिए सिक्योर करके दिखाया है। हर राउंड के अंदर वो प्लेयर जरूर गवा रहे हैं, बट कैसे तैसे कर वो राउंड जीत लेते हैं। बट फ्रेंड्स, क्या ये हो रहा है जो हमने सोचा था? बिकॉज 8 राउंड चाहिए थे उन्हें। क्या वो इस गेम को ओवरटाइम पुश करा सकते हैं? क्या उनके अंदर उतना दमखम है? समय बताएगा क्रैट। एक राउंड करके ही ये कमबैक्स शुरू होते हैं। मुझे लगता नहीं है वैसे अभी ज्यादा पैनिक बटन हिट करने की जरूरत है। मोटिव के पास समय है। मोटिव अभी भी इस गेम को थोड़ा सा लंबा लेकर जा सकती है। 7 मौके हैं उनके पास क्लोज आउट करने के लिए, और इस राउंड में देखिए वेन के पास उनका अल्टीमेट अभी भी मौजूद है। इवन सुशी बॉयज का भी अल्टीमेट है। तो अगर ये सिचुएशन पोस्ट प्लांट तक किसी तरीके से पहुंचाई जाए, राउंड इंटरेस्टिंग अभी भी बन सकता है। वीकर वेपनरी के साथ मोटिव, बट इट्स अबाउट द कपल ऑफ फ्रैग्स पहले कैसे लिए जाते हैं। अगर स्टॉर्म किया जाता है, साइड पे कंट्रोल छीना जाता है, तो चीजें बदलेंगी। बट अकेले खिलाड़ी है फ्लेयरिंग। आई थिंक इट्स टायरॉन जो हुक्का के आसपास थे, बट मिनिमाइज को देखिए, उन्होंने माइंड गेम खेला, उन्होंने डायमेंशन ड्रिफ्ट करी, उन्होंने गेट क्रैश कर अपने आप को फिर से फॉल बैक कराया है। आसान होने वाला नहीं है, बट मिनिमाइज की गार्डन पैंडल यहाँ पे उन्होंने टैप शॉट्स मारकर थोड़ी देर के लिए तो किस्मत जरूर आजमाई है। बट इस स्मोक के दिहाड़े वो प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे। प्लांट सक्सेसफुल हो चुका है, पेंशन का डैमेज ज्यादा पड़ेगा नहीं। पोस्ट प्लांट कैसे खेलेगी? बट वेन विद दैट फ्लैश बट हिज बिच वाज नॉट इनफ। लियो को पिक ऑफ करने की बाद वो ट्रेड ऑफ हो चुके हैं, बट स्टारमैन की पोजीशन, इट्स अ क्रूशियल पोजीशन। अगर इस शेरिफ के साथ पोजीशन निकाली, बट फॉर गॉड सम रीजन उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे रिवील कर दी है। बट वेरा सामने वाले के टाइम जोन के साथ खिलवाड़ होते हुए दिखाया उनको। बट इट्स अ रेस अगेंस्ट, मतलब समय के अगेंस्ट वो रिया पे फ्रिज। एग्जैक्टली, कदीरी काना इन्होंने शायद सिचुएशन कंट्रोल कर लिया है। जी हाँ, समय इतना बचा है कि वो डिफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन शायद अगर वो सीटी तक पुश हो जाता, बाकी से फ्रैग मिलता, तो ये राउंड इंटरेस्टिंग बन सकता था। अल्टीमेट्स भी एक्सपेंड करी है, तो मोटिव के लिए ये चुभने वाली हार तो जरूर रहेगी, क्योंकि शुरुआत वेन ने दिलवाई भी थी, वो ट्रेड हुए थे, बट इवेंचुअली किंग राउंड जीतने में कामयाब। छठा लगाया है बोर्ड के ऊपर, लेकिन जब तक 8 राउंड नहीं होते क्रैट, मैं कहूँगा अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक 8 राउंड नहीं आते ओपोनेंट के बोर्ड पे, तब तक कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहेगी मोटिव। जब जागो तब सवेरा वाली सिचुएशन जरूर है, बट फ्रेंड्स क्यों 8 का इंतजार करना है? आपको हर एक राउंड को पूरे सीरियसनेस, पूरे डेडिकेशन के साथ खेलना चाहिए। और अब इस गेम का तीसरा टाइम आउट, पहले 2 किंग गए थे, अब मोटिव ने भी यहाँ पे टाइम आउट लिया है। अब सलाह मशवरा करना जरूरी है कोच साहब के साथ कि भाई क्या दिक्कतें चल रही है, क्या परेशानियां हैं। जितनी भी समस्याएं हैं अपने कोच के सामने रखिए, वो समाधान देंगे आपको, तभी जाकर आप इस गेम के अंदर एक कमबैक सोच सकते हैं। बट भाई पे ई-किंग के पास मोमेंटम है, उनको पता है दे हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज़ अगर एक राउंड भी लेफ्ट राइट होता है, उनका वो ये बेस्ट ऑफ 3 उनके हाथ से छूट जाएगा। बट अगर मोटिव यहां से हारती है, उनके कॉन्फिडेंस पे एक बहुत बड़ी चोट लगेगी फ्रेंड्स। जी हाँ, मोटिव को काफी ज्यादा ध्यान से खेलने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस मतलब वो सिर्फ इसके लिए नहीं, ये पूरी लीग के अंदर फिर अपने आप को सिर्फ डाउट करते रह जाएंगे। लेकिन अभी भी जैसा मैंने कहा, रास्ता लंबा है, टाइम आउट ले लिया है, बात करी जाएगी यहाँ पर कोच के द्वारा कि भाई क्लोज आउट करते हैं इस गेम को यहीं पर। वेपन्स हैं हमारे पास, और सप्लीमेंट करने के लिए अभी भी फ्लेयरिंग और वेन की अल्टीमेट है। सो दिस शुड बी द राउंड जहां पर इस गेम को समाप्त करे, अदरवाइज इट जस्ट माइट बी टू लेट। 6-12, this is the decider of this best of 3. एस्टन मोटिव ने जीता, लोटस के अंदर किंग ने बाजी मारी, बट बाइंड के अंदर फिलहाल दिख तो रहा है कि मोटिव के पास 12 राउंड है, 1 राउंड की दरकार है, बट किंग हार मानना नहीं चाहती है। वो अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक अपना बेस्ट देना चाहेगी। बट अब थोड़ा सा स्लो पेसी राउंड देखने को मिल रहा है। बी लॉन्ग की तरफ चैंपियन मौजूद है, अकेले खिलाड़ी है अटैकर साइड के, स्टारॉन फ्लेयरिंग वो हुक्का के आसपास, बट बेरा वो पहला कांटेक्ट बनाएंगे। स्पॉटिंग करी गई, बट लू यहाँ पर मारेंगे फ्रेंड्स, एंड आई थिंक क्या इज इट सेफ टू से कि दिस इज द एंड? थोड़ा मुश्किल है क्रैट, क्योंकि अगर आप देखें तो मैप कंट्रोल बहुत है किंग के पास। हाँ, प्लेयर डिसएडवांटेज है, लेकिन इकाना ने जो टाइमिंग ढूंढी है ये बिल्कुल भी एंटिसिपेट नहीं करी जाएगी।
कदेरी उनको स्पॉट किया गया है, स्लो से इफेक्ट हुए नहीं कदेरी और उसी का फायदा उठाया। फ्रैग उनके नाम, मिनिमाइज के 2 फ्रैग और तीसरा भी ऐड करिए टैली के अंदर और किंग अभी भी जिंदा है। मतलब शुरुआत इतनी बढ़िया हुई थी, उनके पास मैन एडवांटेज था, बट मिनिमाइज ने पूरी कार पलट करी। ये देखिए पॉइजन क्लाउड डालकर, मे बी शायद स्पाइक वो जरूर उठाना चाहते हैं, वो रैंडम स्पैन्स के बलबूते। देखिए के ग्राउंड करके फेक कमबैक खेली है कि शायद वो जा चुके हैं, बट नहीं, ये शायद थोड़ा टाइम और खेल सकते थे, बट दोनों प्लेयर का एंगल वहीं पे मौजूद था और फिर इनको ज्यादा मौका नहीं मिला, कोई स्पेस नहीं मिली इस गेम के अंदर कमबैक करने का। बट फ्रिट्ज, मुझे लगता है कि कादरी ने भी ढंग से संभाला। अगर वो योरू की एंट्री हो जाती साइड के अंदर, देन तबाही हो सकती थी। एग्जैक्टली मैड रिस्पेक्ट फॉर द मिनिमाइज, बट आप कोच के चेहरे पे देख सकते हैं, ओह दैट एग्रेशन डूड। थोड़ा टाइम और देते, शायद मॉनिटर पे एक पंच आउट होता। जिस तरीके से गेम खेला है एमटीवी ने, वो रिएक्शन बनता भी है। वेन थोड़े से ज्यादा ग्रीडी हो गए कि ठीक है कर तो दिया है, आइसोलेट मार दूंगा मैं इसे। वही एक बहुत जरूरी डुअल था, क्योंकि मिनिमाइज ने तो पूरी पीठ दिखा रखी थी, वो तो अकेले अपनी लड़ाई लॉन्ग से लड़ रहे थे। इस राउंड में वेरा जरूर किया है, लेकिन वाह नाइस से बच गए, बट बावजूद इसके स्टायरॉन और सुशी बॉयज ने मिलके सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ल्यू को अपना शो स्टॉपर निकालना पड़ गया है एक ऐसे इको राउंड के अंदर, लेकिन अब प्रेशर ड्रैगन के ऊपर है। अकेला खिलाड़ी ए साइड का गार्डियन बनना पड़ेगा इन्हें। इनको कुछ भी करके अपनी जगह नहीं गंवानी। आई थिंक दिस इज अ ब्लंडर। आखिरी खिलाड़ी थे आपके पास, अब कंट्रोलर है, आपके पास दुनिया भर की यूटिलिटीज है, अब स्टिम बीकन यूज कर लिया, आपने मोलोटॉव कर लिया, बट उसके बावजूद अटैकर्स दे रश टू। अब हो चुका है, वाइपर पिट कर थोड़ा यहाँ पे डॉट जरूर करना चाहते हैं, बट कादरी, क्या ये सारी चीजें, क्या ये सब फायदेमंद होगा? कितना खूबसूरत दृश्य है। अटैकर्स की भी वाइपर विट है यहाँ पर, और वहीं पे डिफेंडर्स ने भी इस चीज का यूज करा, बट जी जी मैं तो थ्रिफ्टी फ्रैग मिलेगा, फिर इनको फ्रैग मिला, और मोटिव ने बाइंड में जीत हासिल कर इस पूरी बेस्ट ऑफ 3 बढ़िया डिसीजन मेक। चलो गाइस, द गेम एंडेड, बेस्ट ऑफ 3 एंडेड। 3 मैप गए, तीनों मैप में मजे किए। MTV winning Ascensions। थी
एनकेटी बिल्कुल जवाब ही नहीं दे पाई अपने ओपोनेंट्स का। चलो कोई ना गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव्स यूज। ऐसा दिखाया, थोड़ी सी उम्मीद दिखाई, इवन बाइंड में मिलता हूँ तुम लोगों से मैं कल, टिल देन।